Um, Sir, would you be kind enough to unmute yourself? There would be an option. Unmute, yes. Can you hear me now? Can you hear me? Yeah. Can you hear me, please? Absolutely, absolutely clearly, sir. It's clear. Okay. Yeah. Sir, thank you so much for being so patient with us. Well, I've given a lot of trouble to you. No, not at all, sir. Not at all. No trouble at all, sir. Nothing. So what we'll do is we have requested the participants to join at 1:30. At 1:30, okay. Yeah, yeah. So we'll keep this meeting continued. You do not leave the meeting. We will also not leave the meeting. Okay. In the interim, sir, you can have your lunch and we can connect after that. No, what do I do now? So till 1:30. You can do whatever you like, sir. You don't have to be here. You just leave your system on the way it is. Acha, I leave the system as it is. Yeah, just switch off the camera, switch off the microphone. Rest you do whatever you want. Okay, okay. Yeah, and we start at 1:30, sir. Yeah. So it says mute, I unmute and then stop video. Yeah, you stop your video first. I stop the video first and then mute. Yeah, yeah. And sir, leave it like this. Yes, sir. Yes, sir. Now you're not visible. That's okay. Okay, and then you mute. Yeah, absolutely fine, sir. Now you can leave the system as it is, and we'll join you at 1:30, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you so much.
Dear participants, please turn on the camera. We'll start in 2 to 3 minutes. Am I audible? Yes, you are audible, Anirudh. Hello, good afternoon. Namaskar, sir. Namaskar, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And can you also see me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's begin. Okay. My apologies for the delay because I'm not my ignorance on computing that caused the problem. Anyway, they would fix the problem, and now we start with it. Now today in these two sessions, yes, today we talk about Western jurisprudence and Hindu jurisprudence. We try to compare the two, but the title which I given is Comparing the Incomparables, because the two are entirely different systems. There is not much in common, and we shall try to identify what are the major differences between the two systems. Now, just to correct the context, Rudyard Kipling had said that West is West and East is East. The twain shall never meet. There is another professor of Hindu law, Northcroft. He says there is ideological difference between the Hindu system and the Western system. They are two entirely different systems as such. So we should study these two systems in the light of this observation by this famous jurist. First of all, let's have a brief summary of what Western jurisprudence is like. And then we shall come to Hindu jurisprudence. Since you are all highly educated, you all the expertise in the area of law, therefore I presume that you are well aware of Western jurisprudence, important legal theories, including the latest critical and postmodern legal theories. I proceed with presumption, and therefore I shall have a brief summary and overview of the entire Western jurisprudence. Now, in jurisprudence, we try to answer only one single question.
And that question is, what is law? When we ask a question, what is law? This is not a legal question. This is extra legal, because we cannot answer this question by reference to any code or act, any judgment, or any other source material. We have to talk about law from different perspectives. That is why you have so many legal theories. And still at the end of it, after it all, we are still not clear as to what the exact definition of the concept of law, because it is extra legal question. That is why jurisprudence itself is not a legal subject. This is not a subject of law. Here we talk about law rather than of law. I repeat, in jurisprudence, we try to answer the question, what is law? And this question is not a legal question. This is extra legal. In jurisprudence, we talk about law and we do not talk of law. And that's why there are so many theories, so many approaches, so many perspectives. That Julius Stone, a famous jurist, had said, I quote, jurisprudence is a chaos of approaches to a chaos of topics, chaotically delimited. Try to understand what he says. He says, jurisprudence is a chaos of topics. Chaos of topics and chaotically delimited. This means there is all chaos around. Now, when we ask the question, what is law? It is like asking, what is mathematics? When we ask a question, what is mathematics? It is not a question of mathematics. It is a question about mathematics. 2 plus 2 make 4 is a mathematical proposition. But what is mathematics is not a question of mathematics. It is a question about mathematics. And this is exactly what happens in case of jurisprudence also. That is why in jurisprudence, we look at law in terms of origin, in terms of nature, in terms of content, in terms of functions. You see, with different perspectives. You have at least 12 legal theories, and they do not have much in common because perspectives differ. I shall refer to most of them during the course of discussion. So, jurisprudence has a very wide canvas. It's very comprehensive. It is all inclusive, where you have economic, psychological, political, legal, and all other economic. All these perspectives taken into account in order to understand jurisprudence. Now let's come to how West looks at it. If you look at the history of jurisprudence in West, we find that in the beginning, in the ancient world, religion was the first law. Law started as a religion. It was much later that religion and law separated during Renaissance, after the Roman Church was divided into two, that is Protestants and Roman Catholics. During Renaissance, we came out dark ages where faith was the dominant force.
force of religion and belief. Rationality comes to the forefront. And therefore, during the Renaissance, we had rational constructs of state, of governance, of law, of legal system, etc. Earlier, it was part of religion. Like, I need not go far. Look at the Judaism, look at Christianity, look at Islam. All the three religions are known as Abrahamic, from Abraham, because Abraham is their common ancestor. They are all progeny, all successors, different branches from Abraham. So all these religions are Abrahamic, and there's something in common. One common factor is that all of them are monistic. They believe in monotheism. Christianity, Judaism, and Islam, that there is only one God. They do not believe in multiple gods. They are not polytheistic. They are monotheistic. And all are Abrahamic. Then again, and the important factor there is that all these are Kitabiya. Their first law came from their book. They are Kitabiya religions. Each one of them has a Kitab. Like Old Testament for the Jews, New Testament, the Bible for the Christians, and obviously Quran for the Muslims. So their law to begin with was contained in their holy books. Christian law, Jewish law, Islamic law. What is happening in Afghanistan? Taliban, which is gaining power there, they will impose Quranic Shariat law as contained in the Quran. They will not like and they will not have any respect for secular legal systems. This we have seen earlier and you are seeing it now. So their main law, important law, religious law was contained in these holy books. So law was command of God contained in the holy books. Like you must have heard of 10 commandments of the Moses, the code of Moses, the 10 commandments, the 10 supreme laws for the Jews. There is also a movie on this 10 commandments. And these commandments were revealed to Moses by God on some Mount Sinai. For Orthodox Jew, that is the supreme law. For the Christians, is biblical law. For Islam, it is Quranic law. And when Dark Ages started in Europe, after the decline of the Greeks and the Romans, because in Greek and Roman culture, we still had rationality as the predominant force. You must have heard of Aristotle, Socrates, Plato. All of them were rationists. Cicero, Ulpian, in Roman world, they were all rationalists. But then the reason was lost because religion had complete hold over worldly and spiritual matters. That was the onset of the Dark Ages. Why do you call it Dark Age? For 7-8 centuries after fall of the Roman Empire, Dark Age sets in. So from 3rd or 4th century onwards till 14th century, Europe was a place of darkness. Although later they called Africa the dark continent. In fact, Europe was the dark continent.
when we had advanced civilizations like the Hindu civilization, the Chinese and others, Europe was the most backward because it was faith and religion that dominated everything. The Pope was the temporal and spiritual head of the Western world. There was no place for human reason, and therefore there was no progress. Just to illustrate, many scientists who said something against the Bible, they were burnt on the stake ceremonially by the courts. These courts were manned by Christian fathers. Bruno and Kepler are the prominent astrologers and scientists who were burnt on the stake. You must have heard Galileo. Galileo had said that Earth goes around the sun. Now Bible says that Earth is the epicenter of the universe. Since he had said something against the Bible, he was captured and put on trial. He knew the consequences. He knew that he burned the stake if he doesn't retract. So he was asked, do you still say that Earth goes around the sun? He says, no, I never said that. He was acquitted with a warning. Court told him, don't forget the fate of Bruno and Kepler. Never say it again. It is recorded that while leaving the court, he was heard saying in undertone, murmuring to himself, you may make me say anything, but the fact is, Earth still goes around the sun. This is how Galileo escaped, and he is known as father of science. So when church divided and Pope authority, Renaissance came. Renaissance is known as rebirth, reawakening. We also call it age of reason, age of reformation, age of rationality. So that dark veil of faith was lifted and there was sunshine of reason and rationality. That was the hallmark of the age of Renaissance. Greatest movement in human history was made during Renaissance. Just to make a brief reference, the greatest discoveries of the continents by great admirals made during Renaissance, Drake and Magellan and others, Columbus. Likewise, greatest paintings, Leonardo da Vinci, Raphael, they belong to this age. Cellini, they all belong to this age. Likewise, Newton and Darwin, they belong to this age. So since there was all-round development, and that is why West calls itself as Hellenic culture. The West calls it a Hellenic culture because they think that we are successor to Rome and Greece. That is why it is also known as Age of Revival. What did they revive? It was a revival of rationality of the Greeks and the Romans. That is why known as Age of Revival. Since there was all-round development and growth because of rationality, new theories were constructed. New theories were constructed about states and law. You call them
social contact theories of the age of Renaissance. Before that, let me make a brief reference to one great jurist who studied ancient systems, Henry Maine, the famous work, The Ancient Law. And the conclusions are that in primitive communities, which he calls primitive, which are not progressive, law develops in 4 stages. I presume all that you must have done already. I'm just refreshing it. First of all, law comes as a divine command. That was the beginning which I told you about. Religion is the first law. Since people are illiterate, they can't understand. Therefore, these divine commands, they ultimately develop and mature into customs. They become customary practices because people follow them. And therefore, customary law comes after religious law. And in almost every community, custom has been the important source of law in the ancient world. Today is not that important source because we have legislation today, codification. So second stage is crystallization of these commands in the form of customs. Now the priestly class, which is educated, we had one system because only Pandits had access to knowledge and learning. So they monopolized the knowledge, the learning, the interpretation and application of customary laws. This happened in all communities. Courts earlier in every community were manned by priests, Christian fathers, clerics in the Christian world. We had Pandits in Hindu courts. We had Qajis, the law officer, jurists, Qajis in Islam. In fact, they were the judges in these courts. So they monopolized it. And others did not have access to knowledge and learning. So what happened was that during the course of time, these monopolists, they misused and abused, exploited people, took full advantage of their knowledge and learning. Ultimately, there was a revolt against the oppression by the priestly class. This came in the form of 12 tables in Rome. Romans demanded, let our customs be codified. Let our custom be written down so that you know what our customs are. We do not want to be guided by the priests. So in a static society, backward regressive societies, and every religious community was a regressive society because of belief in faith and not reason. They are known as static society. This is what anyone called them. Development law stops there. It does not proceed further. Law does not proceed further. It doesn't grow beyond the 4th stage. That is tabulation of important customs of the community. Even Manu had said that immemorial custom is transcendental law. It's the supreme law. What you call common law in England, what is common law? Common law means customs of England. Incidentally, common law does not include parliamentary law, technically, although we include it today. But that common law means common customs of the English people. So it was our customs, Western customs, and development of law stops there.
One peculiar feature of our system has been that Hindu law is stopped its growth after we reach the fourth stage. I am talking of classical Hindu law. Classical Hindu law remained static, stationary, regressive. It did not develop further. And to illustrate it further, that Hindu law in 1954 was the same as it was in times of Manu. Since Manu till 1954-55, Hindu law remained fossilized. There was no accretion, no growth, no addition, no innovation. It was only in 1955 that Hindu Code Bill was enacted. And you have codified in the law today like Hindu Succession Act, like Hindu Marriage Act, Hindu Minorities, Guardianship Act. All these acts came in 1955 and after. So our law stood still. I'll make a reference to the later stage also. The second society main calls progressive. In progressive societies, development law gone beyond the fourth stage. And law is developed through other means like legislation, codification, legal fiction. These are the tools employed by progressive societies. For that matter, Western society has been very progressive because they developed their law through legislation, codification, and legal fiction. Earlier, before it came, they had equity and good conscience. Equity also gave very many principles which are part of common law in England today. Because at one time, equity jurisdiction and common law system, they were running parallel to each other. Later on, they were fused. But then this is how they developed the law further. We could not do it. So in this age of Renaissance, please take note of one important development. That the legal theories, the jurists, they started building the theories about law, about states, about governance, based on rationality, reason. They try to find out how and why states are established. What is the legal system like? Why should we need a legal system? What are its more important functions? What are its origins? What role does it play? How can it contribute to social advancement and progress? How can we use it to bring social change? You see, with this perspective, look at law. And they constructed number of theories. I'll not go into details. You already know about the social context theories of Rousseau and Hobbes. Hobbes lived through the Glorious Revolution. He had seen a lot of violence in England. So he wanted to preserve authority of law. He wanted order. And therefore his contract is, the social contract, that state was established, legal system evolved out of a social contract. It is not written, it is hypothetical. Social contract between the sovereign and the subjects. And obviously in a contract there is an offer and there is an acceptance and there is a consideration. So offer by the people was, we surrender all our rights to the sovereign.
We agree guarantee of his laws, and king promises, I shall protect your life and your property. This was the deal. This was a hypothetical construct. So history leads to absolutism, absolute authority of the sovereign. You are familiar with the famous sayings in England, like king is the fountain of justice. King is the maker of law. King is not bound by some law. King is above the law. King can do no wrong. And still you have some residuary part of this doctrine in Article 300 of the Constitution. Tortious liability of the government. That government is liable for tortious acts of its employees, public servants, subject to an exception, that is sovereign functions. If a tort is committed while exercising sovereign functions, then government has the immunity. Otherwise, government is liable. You must have done Article 300, sovereign immunity of the states. Although we have given it a much restricted meaning today, but there's a relic of that principle that sovereign is supreme. Austinian theory that the sovereign, the supreme authority, it is political, it is indivisible, it is illimitable. There are no limits. It can make or unmake any law it likes. There are no restrictions, no limitations. So Austin and Hobbes and others, their theories lead to absolutism of the states. Rousseau is slightly different. Rousseau had said, under the social contract, we had surrendered our rights, but not our natural rights. Natural rights can never be surrendered. No king can take away your fundamental rights, your natural rights. You and the Constitution, Keshwanan Bharti, fundamental rights. That state can make any law, provided it does not abridge or take away any of the fundamental rights. Fundamental rights cannot be repealed, cannot be abrogated, cannot be diluted. This is what Keshwanan Bharti ruling is. So exactly the same tone Rousseau had said, and that is why when French Revolution came, the famous watchwords, rights which Rousseau had talked about, equality, fraternity, and liberty. Liberty, fraternity, and equality. These are natural rights of man. No sovereign can take them away. So history leads to limited government, not illimitable states. These were the theories constructed by the social contract theories during the age of Renaissance. Later on, there were so many theories you are familiar with: Austin's theory, historical school, sociological, natural, Marxist, realist, postmodern, critical, feminist. There are a lot many. You see, it's not possible to talk about all these even in brief. I presume that you have done all these theories. So all these theories ultimately contribute to the present theories on law and state. Even in 20th century, because rationality sometimes leads to perfect irrationality, and history is a witness. Rationality is like a double-edged sword. It cuts both ways.
You can rationalize something good. You can also rationalize something bad. Like a murderer would try to justify the murder and will give very many reasons for his having done so. Like a Hindu kills a Muslim, he is a murderer. But the rationality is, his reason is, look, I'm a nationalist, I'm a patriot, I have rendered national service in killing a Muslim. I'm not a murderer. This is the rational justification we would like to give. That is why in 19th and 20th century, I repeat, in 19th and 20th century, there was unparalleled bloodshed in different wars on account of this rationality. State becomes omnipotent, well organized, militarily organized. And you know the catastrophic consequences of the Napoleonic Wars after French Revolution, the catastrophic war, the first war and the second war. All of them were fought in the name of ideologies. Nazism, fascism, Marxism. They are all rationalist political theories. You may not like them. You may not appreciate them. But the fact is, these theories are all rational constructs. The fascism, the Nazism, and the Marxism. And obviously, the open democracy systems. These are all rational constructs. So after humanity see a lot of bloodshed on account of pure rationality, there were certain theories who revived natural law, principles of natural law, to dilute the rigors of rationality. I am referring to Stemler. Stemler is a jurist who is known as a revivalist. He says and considers a theory known as theory of justice with variable content. Its content might vary because conditions differ at different places. Different system, different environment, different needs. So you can vary it. So construct a theory of justice, keeping in view that their contents might vary. Later on comes Hart. Hart is a positivist concept of law. But then if you look at deeper, he is also a naturalist. He says, what are the primary principles and secondary principle recognition? That classification of Hart reflects some important principles of natural law, like rule of law, like certain jural postulates of which Roscoe-Pound talks. So be it Roscoe-Pound, be it Stemler or Hart, all the jurists have contributed to legal theories which started in the age of Renaissance. And there are so many that I cannot make a brief reference to all these. Latest ones are critical, postmodern, feminist. Now, what are these theories? They are deconstructionists. They deconstruct, demolish all that rationalists had built. Like there should be a constitution, there should be a state, there should be a governance apparatus, there should be law, hierarchy of norms, a legal system, very structured legal system. This is what they emphasize. Now, these critical theories, postmodern theory deconstruct.
they demolish all this. And important jurists who have built theories after deconstruction of the traditional theories, one is Rawls and Amartya Sen. I'll make a reference to these later. Idea of justice. You see, these two jurists, they also are deconstructionists, but they also bring in certain principles of natural law, which I'll talk about sometime later. So this is how, if you look at the history of Western jurisprudence, various theories constructed to explain the nature and growth of state systems, of the legal systems, their role and functions, and other like matters. And these are all theories about law. We are not talking of law here. We are talking about law. That is a juristone chaos of approaches to a chaos of topics, chaotically delimited. This is in brief what Western jurisprudence is like. So important highlights. One, Western jurisprudence theories are built on rationality, on scientific empiricism, because scientific temper is the basic core value which Westerns value. They look at things from scientific point of view, from empirical point of view, and they do not accept anything which cannot be subject to empiricism. Just to take a few moments, the ultimate aim of all philosophers, of all theoreticians, is to know the ultimate reality. Now, how do you try to know it? There are only two ways. There is no third method. One is scientific. Scientific method of study of any phenomena, of anything, if you want to know the ultimate reality of the phenomena. For example, you want to know the rock formation, about rock formation in Himalayas. You can't study the entire Himalaya range. So what do? You pick up a few rocks, bring them to the lab. You analyze and then establish. This is what the rock formation of rocks in Himalaya range is. This is scientific. And this comes in 4 stages. Scientific study must follow the 4 stages. I believe you all know. Just to refresh. First is observation. You observe a phenomena. Observation is not mere seeing. It's not mere sight. It's beyond that. You observe a phenomena. You think about it. You pose a question to yourself. How and why? How did it happen? Why it has happened? Like Newton sitting under the apple tree. An apple falls. You see, like us, he could have done the way we do, that he pick up the apple or a mango, we wash and eat it. And there the man and man. There it ends. This is what happens with most of us. Newton was different. When he found the apple falling below to the ground, he had beyond observation a fact that known as cognition. Cognition means try to understand. Pose a question, why? Is spirit of inquiry. Inquire into it. Why has it happened?
When he posed this question, why? It was cognition. And then followed the scientific experimentation. So what he did, out of the observation, he formulated the hypothesis. Hypothesis was the apple came down to the ground because there is some force like gravitation in the earth. This is a hypothesis. You also do the same. You study, observe, analyze, review the literature, and then ultimately construct a hypothesis. Hypothesis is a tentative conclusion, which after research, either you verify or you demolish. Either you prove or you disprove. This is what happens in every scientific research. So he started throwing things up, experimentation. And to his surprise, everything came down. Out of this observation, experimentation, he had the verification of his thesis, of his hypothesis, that Earth has gravitational pull. That is Newton's law of gravitation. This is how scientific study proceeds. This is the hallmark of Western approach. Even your constitution says, by way of your fundamental duties, that every Indian should cultivate a scientific temper. Am I right there? And should debunk all myths and false beliefs. Our society still is governed, ruled by myths and false beliefs. We have yet to cultivate the scientific temper. I'm talking of an ordinary Indian. I'm not talking of educated Indians. So this is how they applied scientific methods to a study of every institution, every phenomena in clinical system. As against this, there is a second approach to the knowledge of reality. May I ask you, what is the second method? One is scientific. Even Einstein says, I could not establish unified theory. Let future scientists discover that only one principle governs the entire universe, the unified theory. That is scientific. What is the second method of study of reality of something? Yes, this is philosophical. In philosophy, we employ not scientific methodology. We employ intuition, speculation, imagination, logic. Logic and intuition are the main tools in philosophical study. And another difference is that science proceeds from macro to the micro, from the whole to the part. Like we have gone down the study of atom, which you can't see naked eye. We have gone beyond it. We had split the atom. And we also discovered the God particle, the latest experiments. You see that experiment on Frank-Swiss border. God particle, and they had discovered even antimatter. So from the entire cosmos, the totality, we come to the microscopic thing. From macro to micro. This is scientific. You don't study entire Himalayas. You study rock samples. Micro. In philosophy,
you proceed from micro to the macro. Like, does God exist? Is God one? Are gods many? Is there any soul? Is there any rebirth? Is there a cycle of rebirth? Are there heavens? Is there any hell? Is there any divinity? You see, all these big questions are answered by philosophy, not through scientific experimentation. They do it through intuition. They do it through logic. So construct a theory first and justify later. This is philosophical. Construct a theory first and justify it through logic and intuition. Speculation. पहले थ्योरी ये है कि खुदा एक है, उसका जस्टिफिकेशन देते रहिए. कोई कहता नहीं खुदा दो है, उसका जस्टिफिकेशन देते रहिए. साइंटिफिक कुछ नहीं है. There's nothing scientific here. So there's another approach, and we do not have any third approach to reach the ultimate reality. Now, so much so that Hindus believed, as against West, West would not accept anything unless it is subject to scientific inquiry. That is why many people start believing in God. There are people today who do not believe in the existence of God. There are many others who do, because they do not accept anything which can't be scientifically proved, which can't be said to empiricism. In our case, our approach had been, which I'll refer to later, that this physical world, ये मिथ्या है, ये माया है, ये रियल नहीं है. अगर आप रियलिटी चाहते हो तो इसके बियॉन्ड जाओ, मनन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, इंट्यूशन अप्लाई करो, तभी आपको अल्टीमेट रियलिटी का पता चलेगा. जो दिखता है वो रियल नहीं है, वो मिथ्या है, माया है. I hope all of you at least must have peripherally the concept of Maya, that this entire physical world is a mirage. हम तो ये कहते हैं ये जिंदगी भी क्या है, ये शरीर है, ये शरीर तो एक कपड़ों की तरह है. आपने एक कपड़ा उतारा, दूसरा कपड़ा पहन लिया. सोल अजर है, अमर है, ट्रांसमाइग्रेशन है, इटर्नल है. तो ये सब क्या है? ये सब फिलोसॉफी है, इसमें साइंस नहीं है. And obviously every philosopher will give justification for his theory which operates at macro level. So from micro we proceed to macro. I'll refer to this Maya and Mithya later when I come to Hindu jurisprudence. So to sum it up, let me give you brief highlight of what Western jurisprudence is like. Western theory of jurisprudence, whether of state or of law or of governance or any such institution, these are built on the basis of rationality and scientific empiricism. Every one of them. Even Rawls says, for ideal justice, theory of justice, reason is not necessary condition, but reason is important. It may not be a necessary condition, Rawls says, but this is an important condition. Rationality still plays a part in Rawls theory and even in theory of Amartya Sen, which I'll refer to a bit later. So this is what Western jurisprudence is like. Our jurisprudence is different. That is why when I formed the title, I said Western jurisprudence
and Hindu jurisprudence comparing the incomparables, because there is hardly anything common between the two. There are all the differences, which we shall highlight after we understood what Hindu system is like, what Hindu legal system is like, what Hinduism is like. Now, Hindu law, as you know, can be classified historically in terms of timeline in three kinds, in three classes. One, the ancient classical Hindu law. You call it old Hindu law. The classical ancient Hindu law, this is one. The second phase in Hindu law is, we call it Anglo-Hindu. During British times, because Britishers applied Hindu law to Hindus, but they brought out certain changes. Yes, is there any question, please? Did somebody want to ask a question? There is a question which is there in the chat Yeah, box. please. Yes, you are welcome. It's been asked by one Mr. Hitesh, Okay. and he asks, so you discussed a little while ago about the concept of illusion while you were discussing the philosophical approach. So the question is that there are other thinkers such as Charavaka who Yeah. have rejected the idea of illusion. Yeah. Now, how do we, or what do you have your comment with respect to the contribution made by such thinkers who have rejected the idea of illusion and then tried to philosophize the entire Well, let existence on a me different add only level? one sentence here, that Hinduism is so amorphous. It is not unified linear theory. It's not linear ideology or religion. You see, it has diverse streams. It has so many streams that you cannot even abbreviate all of them within a short span of time. So, no use discussing individual views. The basic idea of Hinduism has been that physical world seems to be mithya, concept of Maya. Well, critics are there. They may not accept it. But this has been the basic tenet of Hinduism. Don't you agree there? This has been traditionally, historical, the basic tenet. इसलिए जब प्रवचन पंडित करता है तो आज भी वो ये कहता है, ये संसार मिथ्या है, इससे मोह मत लगाओ, ये शरीर भी मिथ्या है, ये तो चोला है, आप चोला बदलते हैं, असली चीज सोल है जो अजर है, अमर है. और इसका एक रिफ्लेक्शन, नॉट एग्जैक्ट रेप्लिकेशन हिंदू आइडियोलॉजी, Immanuel Kant's transcendentalism. Transcend means which goes beyond the physical world, which transcends, travels beyond. Look what he says, that we look at things with our own perspective. Things are not seen as they are. Things are seen as we want to see them. We wear colored glasses. Everybody is constrained by one's prejudice, by one's experience. Your experience and prejudices are limiting force. You cannot know the reality. So he also says, like Hindu thinkers say, that you cannot reach the ultimate reality through scientific methods, because science deals with physical matter. With physical matter, anything that you study in a science lab is something physical. We have to go beyond this, and he calls it transcendental philosophy. He also employs intuition, thinking to know the ultimate reality. Let me illustrate this.
We have a system of reservation. Now, on reservation, people have different views. Some support it, some oppose it. They vehemently oppose it, and some vehemently support it. There is a Brahmin. He's very poor. He is poorer than a member of the scheduled caste. Some Brahmins are poorer, yes. But since the Brahmin, if you ask him, do you support reservation? He would say no. Why? Because he carries the bondage, that mental block of prejudice. He cannot go beyond this. He will never accept that Shudras, backward class people, should be given special rights so as to bring them at par with others. Whereas a Shudra, a backward class person, he may be very rich, and some of them are rich. He will still support reservation. Why? Because our prejudices limit our reach. They are a limitation. They are a constraint. This is what Immanuel Kant says. Same thing, Rawls. Come to Rawls theory. Rawls gives us ideal theory of justice, and he calls it justice as fairness. What is this fairness? Is an assumption. Is a principle of natural law. It's a natural principle. Fairness is a natural principle. So he is employing fairness as justice. And what he's saying, how do you construct a theory? How do you construct a legal system where fairness prevails, where justice prevails? He says, one, first of all, we should all assume veil of ignorance. हमें ignorance का चोला ओढ़ना चाहिए, बुर्का. Ignorance का बुर्का ओढ़ लीजिए. इसका क्या मतलब है? आपके माइंड में जितने प्रेजुडिस हैं, जितने बायस हैं, प्री कंसीव नोशंस हैं, उनको सबको निकाल दीजिए. As if you are ignorant, you are like a small child whose mind doesn't have any imprint of experiences. तो एक बच्चे की तरह हो जाइए. Then you can be objective. If you do not bear this wheel of ignorance, you cannot be objective and fair. तब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते. मुसलमान है, मुसलमान की सोचेगा. हिंदू है, हिंदू की सोचेगा. एक शेड्यूल्ड कास्ट है, वो अपनी तरह सोचेगा. You see, because our experience is a constant on us. So he says, veil of ignorance. What is the veil of ignorance? This is forget the physical world for the time being. ये भूल जाइए कि आप कौन हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस कास्ट के हैं, आप किस कलर के हैं, आप किस मुल्क के हैं, आप किस धर्म के हैं. यही veil of ignorance है ना. This is what veil of ignorance is. So if you wear that veil of ignorance, you could be objective and fair. This is one condition. And second, I'm not in a raw theory as such. Difference principle. That inequalities should be so managed. दुनिया में बहुत inequalities हैं. Should be so managed that maximum benefit reaches the deprived, the lower strata. सबसे ज्यादा फायदा कानून को उनको ही पहुंचना चाहिए. ये डिफरेंस प्रिंसिपल है. दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट ए थियरी ऑफ जस्टिस. ये ब्रीफ में रॉल्स है. तो रॉल्स नेचुरलिस्ट भी है,
और रॉल्स वही कहता है जो इमैनुअल कांट ने कहा और जो इन ए वे हिंदू सिस्टम ने कहा कि जो संसार आपको दिखता है वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं, जो वो है वो नहीं दिखता आपको। इमैनुअल का फेमस वर्ड्स, वी सी थिंग्स as we want to see them because all of us colored glasses, and that is why he has given us transcendental philosophy. यही ट्रांसेंडेंटलिज्म हिंदुइज्म में है। इस पर मैं आऊंगा, आपने माया का जिक्र किया। दैट इज वाई हिंदुइज्म के कोर टेनेट ये है कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार रियल नहीं है, रियलिटी इसके बियॉन्ड है, इसके आगे कहीं है। अब उसको कैसे जानोगे? उसका रास्ता साइंस नहीं है, उसका रास्ता शायद इंट्यूशन है, उसका रास्ता सोच है, उसका रास्ता मनन है, मेडिटेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ एनालिसिस है। इस रास्ते से ही आप अल्टीमेटली को जान सकते हैं। अब जो लोग संन्यास लेते हैं, सब तो संन्यास नहीं लेते कि वो शायद उनके अपने मतलब होंगे उसमें जाएं, और बहुत से सन्यासी जेल में भी हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन जो आदमी सन्यासी हो जाता है, असल में सन्यासी होता है, वो दुनिया क्यों छोड़ता है? वो इसलिए छोड़ता है कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है, मुझे उस दुनिया का पता करना है, उस वर्ल्ड का पता करना है जो उसके आगे। दैट इज व्हाई मेडिटेट्स। बुद्ध भी गया, 6 साल तक बैठा रहा, उसने भूखा मरा, तपस्या की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट कम्स एंड ही सेज, एंड इंसिडेंटली बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। बुद्धिज्म कहता है मॉडरेट पाथ से चलो, निर्वाण प्राप्त करो, उस टाइम आप भी डिविनिटी के बराबर हो जाओगे। वो खुदा में यकीन नहीं करते। जैनिज्म भी भगवान में यकीन नहीं करता, वो कहते हैं तीर्थंकर, लेट एवरीवन एलिवेट हिमसेल्फ टू अ लेवल ऑफ ए तीर्थंकर, दैट इज टू द लेवल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। उस लेवल तक पहुंच जाओ। सो ये डिफरेंट करंट्स हैं। Hinduism is not one unified religion, and that is why on Maya there could be different approaches. I don't deny it, but then Maya is still the basic concept of Hindu theology. ये मेरा कहने का मतलब है। In any case, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं ऑन हिंदुइज्म या हिंदू फिलॉसफी पे। I look at it only as a layman. I try to understand, like you, as to what Hindu philosophy, Hindu theology, Hindu law, Hindu social institutions, Hindu are like. This is what our effort is. Now, earlier I told you that Hindu law is ancient Hindu law. Then we have Anglo-Hindu during British times. They made certain modifications. And then we have modern Hindu law. Modern Hindu law doesn't have much in common. Doesn't have much in common what classical Hindu law was like. To a major extent, we have modified. We have modified all the important customary practices of classical Hindu law. हमने वो सारा चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज सैक्रामेंट था, अब ये सैक्रामेंट नहीं है। इतना पार्ट जरूर है कि रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, दैट मैरिज शैल बी कंप्लीट ऑन सप्तपदी। जब 7वां स्टेप आएगा तो हिंदू मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हिंदू मैरिज सैक्रामेंट नहीं है, डिवोर्स भी है। ये 7 जन्मों का संबंध नहीं है जो हिंदू लॉ में कहा करते थे। शादी है जन्म जन्मांतर, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ सक्सेशन, गर्ल्स गिवन राइट ऑफ सक्सेशन, गर्ल्स मेड को पार्टनर्स, चाइल्ड मैरिज एस्टेन्ड, विडो रीमैरिज,
कहां थी आपके यहां ये? हमने सारा बदल दिया. Modern Hindu law has nothing and doesn't retain much of classical Hindu law. But today we are concerned classical Hindu law only. The classical Hindu jurisprudence. Modern jurisprudence हिंदू में कुछ नहीं है. जो भी है वेस्ट का है. हमारा अपना आज कुछ भी नहीं है. आपका लॉ भी वेस्टर्न है. आपका पहनावा वेस्टर्न है. अब तो आपका खाना वेस्टर्न हो गया है. आपकी जबानी वेस्टर्न हो गई. आपका आर्किटेक्चर उन्हीं का है. आपकी इंजीनियरिंग वही है. आपकी साइंस भी सारी वही है. हमारा अपना कुछ नहीं है. So in a different age, we are talking of classical Hindu law. So we pass through 3 stages: ancient, then Anglo-Hindu, and then modern. ये हिंदू लॉ के 3 हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अब आइए आप, after classification, what are the sources of classical Hindu law? हमारे हिंदू लॉ के क्या सोर्स थे? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं. ऑफ क्लासिकल हिंदू लॉ. जहां तक सोर्स का बात है, यहां एक चीज मेंशन कर दूं, दैट इंडिया नेवर हैड सेंस ऑफ हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री की सेंस एज ए कॉम कभी रही नहीं. हिस्ट्री की सेंस क्या होती है? अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड करिए, उस हिस्ट्री से लेसन सीखिए, ताकि दोबारा आप गड्ढे में ना गिरें. हमने अपनी हिस्ट्री लिखी नहीं, हमने अपनी से सीखा नहीं, इसलिए वही गलतियां हम दोहरा रहे हैं जो हमने पिछले 3000 साल में की है. एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हमारी हिस्ट्री किसने लिखी? वेस्ट के लोगों ने लिखी. आज भी हिंदू लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट वेस्ट के ही हैं. हमारे अपने भी कुछ हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हिंदू लॉ के भी वेस्ट के हैं. मैं आपको नाम गिनाऊं. सबसे पहले जर्मन्स आए, मैक्स मुलर, Humboldt. They recognize the beauty of Indian literature, Hindu literature, Hindu philosophy. Max Muller was the best known Indologist of his time. Schopenhauer बहुत बड़ा फिलोसफर है जर्मनी का. उसकी तो सारी फिलोसफी हिंदुइज्म बेस्ड है. He talks of will to power. If you have the will, you will reach that pinnacle of power. If you have the will. What is Gita saying? Am Brahmi. मैं ही ब्रह्म हूं. ब्रह्म मीन्स गॉड. हम पर्सनलाइज गॉड में यकीन नहीं करते हिंदू, कि खुदा है, वो हेवन में बैठा हुआ है, वहां से कमांड दे रहा है, प्रॉफिट भेज रहा है, उनको उनका लॉ बताता है. ऐसा नहीं हमारे यहां से. हम खुदा को पर्सनलाइज एंटिटी नहीं मानते. हम कहते हैं अगर वो अथॉरिटी है तो ये वर्ड मार्क करिए, वो सुप्रीम है, वो ऑलमाइटी है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्विकार है. निर्विकार मीन्स वेदर कोई विकार नहीं है, उसके अंदर कोई गलत चीज नहीं है, वो इनफाइनाइट है, वो टाइमलेस है. टाइमलेस है, ऑलमाइटी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और निर्विकार है. और वो दूसरे एक वर्ड मैंने और किया था, निराकार है, उसका कोई आकार भी नहीं. एंड बेसिक थीम इज, यस, you want to say something? Hindus do not believe in personalized gods. अब आप कहेंगे हिंदू मोनोथिस्टिक है या पॉलीथिस्टिक है, क्योंकि हिंदुओं में 33 करोड़ या 33 लाख जो भी हैं देवी देवता. तो आप कहेंगे कि पर्सनलाइज क्यों नहीं है? ये गणेश है, ये हनुमान है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये अवतार है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये शिवशंकर है.
These are manifestations, मुद्रास. ये ऑलमाइटी की मुद्रा हैं, उनकी इमेज है, उनका रिफ्लेक्शन है. ये खुदा नहीं है. They are not gods. That is why we have the concept of incarnation. कि godlike persons come on earth. गीता, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति. और गीता हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ी एक्सपोजिशन अगर है तो कृष्ण ने ही वेदांत को शुरू किया. ये जो सनातनी कल्चर है हमारी, जो सनातन धर्म है, ये कृष्ण उसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, द गीता. अब गीता के दो वाक्य, एक मैं ही ब्रह्म हूं, मैं. सेकंड के कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन. अगर कॉज है तो इफेक्ट होगा, और अगर इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं कॉज भी होगा. बगैर कॉज के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, और जहां कॉज होता है वहां इफेक्ट जरूर होगा. तो उसने क्यों कहा ये कि एक्शन करो, फल की चिंता मत करो. अगर एक्शन किया है तो उसका फल तो आएगा ही. इफेक्ट विल कम. प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन इम्बाइब्ड इन गीता. ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक का कलेक्शन है जिसे हम गीता कहते हैं. अदरवाइज हिंदुस्तान का जो हमारा रिलीजन है, ये किताब या नहीं है. हमारी एक किताब नहीं है, हमारी बहुत सी किताबें हैं. और गलती से हम कुछ वो किताबें इंक्लूड करते हैं जो धर्म किताबें नहीं हैं, जो कमेंट्रीज हैं, लाइक धर्म शास्त्रास. जब अंग्रेज यहां आया, हमारे यहां सेकुलर लॉ नहीं था, हमारे यहां कंसेप्ट था धर्म का. तो उन्होंने क्या समझा, पहले हिंदू में बताऊं, देयर वाज नो नथिंग लाइक हिंदुइज्म. ये जो हिंदू वर्ड है, ये सबसे पहले पर्शियंस ने यूज किया. दोज हु आर लिविंग नियर इंडस रिवर, जो सिंधु के पास रहते थे, वो ऐशाद प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो उन्होंने इसको हिंदू कह दिया. तो ये वर्ड हिंदू के मच लेटर. हमारी जो रिलीजन है वो है सनातन, और उसका कॉर्पस है वेद. वैदिक कॉर्पस इज द रिलीजियस लिटरेचर विच सपोर्ट्स एंड सस्टेन्स हिंदुइज्म. हिंदुइज्म तो बहुत बाद की टर्म है. आपकी एक रेंज अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम सुना होगा. वाई हिंदू कुश? कुश मीन्स टू किल. खुद कुशी, खुद मीन्स सेल्फ, कुशी मीन्स किल, टू किल वंस ऑन सेल्फ. इसका नाम हिंदू कुश इसलिए पड़ा कि लाखों हिंदू उसको गुलाम बना के ले जाया करते थे. कुछ रास्ते मर जाते थे, कुछ मेल ट्रीटमेंट मरते थे. कोई बात नहीं, मर गए, उसके बाद पकड़ के और ले आओ, क्योंकि हिंदुस्तान पर हर साल हमला करते थे. अफगान अटैक एवरी ईयर. कश्मीर अटैक 18 टाइम्स. तो उस रेंज का नाम किया किल हिंदूस, हिंदू कुश. तो जो वर्ड्स आए हैं ये बहुत बाद के हैं. हमारा हिंदू रिलीजन बेस्ड ऑन वैदिक कॉर्पस, जिसको कहते हैं सनातन. सनातन मीन्स इटरनल, एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहेगा. एवर लास्टिंग है, इटरनल है, उसको कहते हैं सनातन. तो हमारा हिंदू धर्म है सनातन धर्म. इस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा. तो जब अंग्रेज यहां आया, एंग्लो हिंदू लॉ, तो ही ट्राइड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम लॉ, क्योंकि उनका आउटलुक ही सेकुलर था.
उनका सेक्युलरिज्म है सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, रिलीजन एंड लॉ मस्ट बी केप्ट सेपरेट, देयर शुड नो इंटरमिक्स। हमारा कंसेप्ट सेक्युलरिज्म का है सब धर्म एक समान, सब धर्म की एक रेस्पेक्ट, सब धर्म को एक समान मानो, हमारा सेक्युलरिज्म है। उनका सेक्युलरिज्म है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड लॉ, तो उन्होंने यही करना शुरू किया। So when they administered Hindu law to Hindus, first was 1772. Warren Hastings in 1772 took a decision that Hindu law shall apply to Hindus and Muslim told Muslims on personal matters like marriage, like succession, etc., etc. These are personal matters. But when British courts applied, they once again tried to segregate. Like you note down important case, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका नाम है केस का गंगाधर तिलक, इसको नोट कर लीजिएगा। गंगाधर तिलक वर्सेस श्रीनिवास पंडित, 1915 प्रिवी काउंसिल। I repeat, Gangadhar Tilak versus Srinivas Pandit, 1915 Privy Council. The question here was, is this particular adoption valid? Because adoption is an institution well recognized in the Hindu law. Hindu system में adoption की institution हमेशा रही है। Why? पुत्र होना चाहिए, वो पुत्र से बचाएगा। पुत्र means hell. Only पुत्र shall save you from hell. पुत्र, so पुत्र होना चाहिए। अगर नेचुरल पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र लीजिए, एडॉप्ट कर लीजिए। So adoption has been an important institution of Hinduism. तो इसमें भी adoption था, लेकिन according to Hindu law, certain rituals are necessary, certain ceremonies are necessary for a valid adoption in Hinduism. उस ceremony कहते हैं, this known as Datta Home. Datta Home is a religious ceremony which is mandatory for any valid adoption in Hindu law, Hinduism. ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा कोर प्रिंसिपल था। तो एक एडॉप्शन हुआ जिसमें दत्ता होम नहीं हुआ, इसको चैलेंज कर दिया गया क्योंकि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, सक्सेशन इन्वॉल्व है। बिकॉज एडॉप्टेड सन ऑफर पिंडदान, says from Put, he inherits and is transplanted from one family to another. Now he becomes a member of that family, son of the adopting father. So the question was, is this adoption valid without the ceremony of Datta Home? प्री काउंसिल ने कहा दत्ता होम एक सेरेमनी है, but its non-performance shall not affect the validity of adoption. Adoption is valid despite the ceremony of Datta Home. This means जो हमारा essential part ceremony का है उसको अलग कर दिया और लीगल वैल्यू अलग कर दी। ये केस पहुंचा सुप्रीम प्रीवी काउंसिल। Yes, this is a valid adoption. This means Britishers try to segregate religion from law because this has been their approach in the West. हमारी अप्रोच ये नहीं थी। तो हम बात कर रहे थे, what are the sources? We had no sense of history. We never wrote our history.
वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री लर्न करते तो गजनी 18 बार हमले नहीं करता, चीन से इसमें धोखा नहीं देता, चीन ने धोखा नहीं दिया, हम थे बेवकूफ, धोखा हमने खाया। दुश्मन तो धोखा देगा, इसमें क्या नई बात है, हिस्ट्री बताती है आपको सारा। आपने क्या सीखा? आपने 99 में क्या सीखा कारगिल वार में? कि पाकिस्तानी बैठ गए, फेलोर आपकी इंटेलिजेंस का है, और इतनी कैजुअलिटी लड़ाई आपने लड़ी, आपने कुछ नहीं सीखा। आपने हिस्ट्री से कभी कुछ नहीं सीखा। और आई नॉट इजरेट, हम हिंदुस्तान में किसी लड़ाई के मैदान में, हमारी हिस्ट्री है ये, हमने एक भी लड़ाई नहीं जीती। 71 को छोड़ दीजिए, हमने सिर्फ पिटाई ही खाई है। पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ ट्रेन, यू नो इट। 3 बैटल्स ऑफ पानीपत आपकी हिस्ट्री है। बैटल ऑफ प्लासी आपकी हिस्ट्री है। सब्सिक्वेंट बैटल्स, हम थे लाखों में, वो थे हजारों में, लड़ाई फिर भी नहीं जीती। बाबर कितने लोग लेके आया था? 10,000, 12,000। कितनी फौज लौदी की थी? 2 लाख। कितनी बार राणा सांगा की थी? 2 लाख। लेकिन लड़ाई नहीं जीते। मराठा आर्मी कितनी बड़ी थी? अगेन अफगानिएटर अब्दाली, अब्दाली 50,000, मराठा 2.5 लाख। वो पानीपत में आया, आपकी रसद काट दी, आपकी फौजें भूखी मर गई, आप पानीपत में उससे लड़ाई नहीं लड़ सके। 70,000 मराठा स्लॉटर्ड ऑन द बैटलफील्ड्स। ये हमारी हिस्ट्री है। हमने हिस्ट्री से कभी कुछ नहीं सीखा। क्यों? वी हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारी कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं रही, हमारी कोई स्टडी नहीं रही। यही हमारा हिंदू लॉ में था। तो हमारा पहला सोर्स क्या है? व्हाट द फर्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? ये है श्रुति। श्रुति मीन जो सुन लिया, हर्ड नॉलेज। हर्ड नॉलेज, आपने जो सुना वो आगे पास कर दिया, रिकॉर्ड नहीं किया। आपके वेद हमें नहीं पता कितने पुराने हैं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। हो सकता है 5,000 साल पुराने हो सकता है इससे पुराने हो, लेकिन लिखे कब गए? लिखे गए 4th and 5th सेंचुरी में, क्योंकि हर्ड थे, ओरल ट्रेडिशन, हमने लिखा नहीं। अब जब आदमी ओरल ट्रेडिशन से लिखता है तो उसके अंदर बहुत से डिस्टॉर्शन आ जाते हैं। एक से दूसरे के बाद पहुंची, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, एंड लाइक वाइज जनरेशंस। तो डिवाइन वेद हैं, वेद आर डिवाइन, दे आर इटर्नल, दे आर इनफॉलिबल। ये मान के चलते हैं, उनके अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे वेद जो ये श्रुति हैं ये ठीक से रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए। एनीवे, जो रिकॉर्ड आपके पास है वो है। और जैसा मुझे समझ है, शायद मैं गलती हो सकता हूं, ये वेद व्यास ने लिखे। इफ एनीबडी हैज नॉलेज अबाउट इट, प्लीज टेल मी। शायद वेद व्यास ने आपका कंपैरिजन किया वेदों का, उसने लिखे हैं, और वो तो हुआ है 4th सेंचुरी में। तो हजारों साल तक ये श्रुति था। श्रुति इज वन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू थियोलॉजी, हिंदू रिलीजन, Hinduism, whatever you call it. The second source is Smriti. Smriti means memory. What you memorize, what you retain your memory, जो आपको याद रहता है, तो स्मृति है। इस स्मृति, हमारे बहुत स्मृताकार थे जिन्होंने स्मृतियां लिखी।
जिनको कहते हैं धर्मशास्त्र। ये जो धर्मशास्त्र हैं, दे आर सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। और धर्मशास्त्र एक नहीं, धर्मशास्त्र कई हैं। धर्मशास्त्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मनुस्मृति। स्मृति है ये, याद रखिए, स्मृति। जो मनु को याद रहा, जो मनु की मेमोरी में था, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है। एक नारद ने लिखा, वो भी धर्मशास्त्र है। एक यज्ञवल्क्य ने लिखा, वो भी धर्मशास्त्र है। और एक और है, भर्तृहरि, पता नहीं का नाम है, मैं भूल गया हूं, उसने भी ये लिखा। लेकिन ये सारी स्मृति हैं। अंग्रेजों की गलती क्या हुई, दैट दे ट्रीटेड धर्मशास्त्रास एज कोड ऑफ हिंदू लॉ। These are not codes of Hindu law. These are not codes of Hindu law as such. They are only commentaries. Please understand. मनु कोड को कोड नहीं हिंदुओं के लिए, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, ये एक डिक्लेरेशन है, ये कमेंट्री है. But Englishmen treated them as if it is a code, because they were used to the word code, Justinian code, code of Moses, the Roman code, the Christian code. ये सारे उनको दिए था कि ये लॉ का कंपाइलेशन है. ये लॉ का कंपाइलेशन नहीं है. So second source is Smriti, and Smritikars wrote 4 or 5 धर्मशास्त्रास. सबसे इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र है मनु का, और मनुस्मृति में जो है वो हिंदुइज्म के कोर प्रिंसिपल इंक्लूडेड है, जिसके बारे में थोड़ी देर बात करूंगा मैं. सो सेकंड सोर्स ये है. उसके बाद आइए, जो थर्ड सोर्स है आपका है, वो है आचार. आचार मीन्स व्यवहार, योर कंडक्ट. इसी वंस कंडक्ट और रिपीटेड कंडक्ट, आचार एंड कस्टम्स. एक आचार जो समाज करता है वो कस्टमरी फॉर्म हो जाता है. तो कस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. ह्यूमन कंडक्ट और आचार भी एक हिंदू लॉ का सोर्स है. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट अकॉर्डिंग टू मनु, immemorial custom is transcendental law, that the supreme law that superimposes, that prevails over everything else. This is what he says. And we are the reflection of those customary laws even today in modern Hindu law. For example, please read law of marriage of Hindus. उसके अंदर कस्टमरी मैरिज को बचाया गया है. Am I right? That customary marriages will not be governed by this rule. So we have protected the customary laws. For example, there are certain marriages in South which are against Sapinda. Sapinda marriage is not a valid marriage. लेकिन साउथ में सपिंडा मैरिज भी कस्टमरी मैरिज तौर पर मानी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने देखा है, मैं whenever नलसार, सो इन आंध्र प्रदेश ए मामा मैरिज इज भांजी. सबसे एलिजिबल मैरिज के लिए मामा भांजी हैं. मामा अपनी भांजी से शादी करता है, बहन की लड़की से शादी करता है. ये हिंदू लॉ में तो मान नहीं है, लेकिन एक कस्टम है. सो सम कस्टम्स एंड लाइक आइस पंजाब कस्टमरी लॉ, आज भी इट हैज द फोर्स ऑफ लॉ. उसका लिमिट हो गया अभी है, इज लिमिटेड नाउ, बट देन स्टिल वी हैव कस्टमरी लॉ पंजाब. I told you Hindu law has not been very unified, integrate religion or law.
It a very stringent stance. सो एक कस्टम और आचार ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स हिंदू लॉ का रहा है। हमारे यहाँ ना कोडिफिकेशन था ना लेजिस्लेशन था, इसलिए हम वहीं पर रुक गए। हिंदू लॉ जो मनुस्मृति है वो 1955 लागू था। 1955 तक मनु ही गॉड गिवर था, लॉ गिवर था। मनु इज नॉन ए लॉ गिवर। मनु का लॉ ही लागू था हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए। ये हमने चेंज किया 1955 में, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। Now after the sources we come to Hindu theology के भगवान, डिविनिटी, रिलीजन को हिंदुज्म कैसे देखता है। अब मुझे बताइए कि डू यू नीड एनी ब्रेक? आपको 10-15 मिनट की ब्रेक चाहिए? Yes, sir. It is now 3 o'clock. Could we meet at 3:15 Yes, sir. Yes. so that you have a cup of tea and मेरे गले को थोड़ा सा Okay. आराम मिल जाए 10 मिनट? Yes, sir. So we Absolutely. will meet exactly at 3:15 Sure, sir. after 15 minutes. So we have 15 minutes break. Meanwhile जो आपके सवाल हैं जो अब तक डिस्कस किया है वो सवाल भी आप आर्टिकुलेट कर लीजिए, उनको भी सोच लीजिए क्या सवाल पूछने हैं। अगले सेशन में आपके सवाल मैं आई लाइक टू आंसर ऑल ऑफ देम। ओके देन, सो दिस इज फॉर द मोमेंट
So shall we start Yes, sir. or wait for What do you? wait for others to join? Yeah, so yeah, we can give it a minute. There are a few questions as well, sir. Yes, certainly. Okay, so one of the participants has asked the question, Yeah. what is the reason behind Manusmriti being one of the most important and most referred to smritis among all the smritis that you have discussed? My answer to that would be that since there are, you see, not one but many Manusmritis or that Dharam Shastras, Manu's codes, because Manu was treated as a Bhagavan, Manu the lawgiver. In fact, the Britishers treated that as the most authentic. And obviously, whatever view they had, that continued. It is not that other Hindus did not refer to Narad or Yajnavalak. They did refer. But that is most comprehensive in its expense. It covers entire life existence. In fact, this is what Davis has said, theology of life. Manu writes on everything. So Britishers thought that this is a complete code. And that is why for them it was standard Manusmriti or reference. इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया. एक तो सवाल ये है. दूसरा, So, दूसरा सवाल है, please enlighten us on the concept of liberalism and libertarianism in the context of justice. I didn't get your question. Could you say it again? The participant is asking if you could enlighten us Uh, on the concept of liberalism and liberalism. liberalism and libertarianism. Libertarianism. Yeah, in the context of justice. Yeah. You see, liberalism simply means that theory of justice or system of justice must cater to all sections of the society with guarantee of basic fundamental values and rights. That is liberalism. And liberalism has been hallmark of democracies, you know it already. Libertarians go beyond, like feminists.
क्रिटिकल जूरिस ये कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट लिबरलिज्म का है ना, ये मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑपरेसिव है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम, गारंटी, कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस सबसे जस्टिस नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं दैट्स व्हाई दे आर एंटी फाउंडेशन, वी कॉल देम डीकंस्ट्रक्टिविस्ट्स, एंटी फाउंडेशनलिस्ट। सो दे आर लिबर्टाइंस, ये मार्क्सिस्ट हैं एक्सट्रीम डिग्री के। दे ओनली नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट, दे हैव नॉट सजेस्टेड एनी इंटीग्रल थ्योरी। किसी भी क्रिटिकल मूवमेंट में कोई थ्योरी किसी ने सजेस्ट नहीं की है, सिर्फ क्रिटिसाइज किया। ये है लिबर्टनिज्म कि दे गो बियॉन्ड दीज गारंटी लिबर्टीज अंडर लॉ। इससे कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। In fact, their belief says that constitution and state system, even in democracy, is monopolistic, is exploitative, it has only the elite. And the fact is, we also know it, that a democracy is a government by the rich. ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन लिबरल है, सारे राइट आपको दिए हुए हैं, जस्टिस गारंटी किया गया है, कोर्ट सिस्टम भी है, लेकिन जस्टिस कितना मिलता है, कितनी इक्वालिटी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोशलिस्टिक है। हमने तो प्रेमल में कहते हैं ना सोशलिस्टिक, हम कभी सोशलिस्ट ना थे ना कभी होंगे, हमने कभी ट्राई भी नहीं किया। सो दे लिबर्टेरियंस जो है ना, ये दे गो मच बियॉन्ड, दे आर सुपर क्रिटिकल, और मैं तो ये कहूंगा दे आर एक्सट्रीम रेडिकल मार्क्सिस्ट। दे क्रिएट कैओस, दे डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग कॉन्क्रीट। और यही रिफ्लेक्ट होता है इवन द थ्योरी ऑफ अमृता सेन। अमृता सेन क्या कहते हैं? ही जो टू वर्ड्स, नीति एंड न्याय, ये मार्क करिए, दो वर्ड्स हैं। नीति मीन्स फॉर्मलिज्म, आपका इलेक्शन है, आपका कोर्ट सिस्टम है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नीति है, ये फॉर्मलिज्म है। फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मलिज्म। रिजल्ट इज इनजस्टिस। सो न्याय कहां होगा? टेक नोट द वर्ड्स। न्याय होगा उस गवर्नमेंट से विच इज गवर्नमेंट बाय डिस्कशन एंड कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब उनसे ये पूछे अमृता सेन साहब से कि कंसल्टेशन लोग कैसे होगी? हाउ डू कंसल्ट द पब्लिक? हाउ विल एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शंस? कैसे करेंगे आप इसको? ये कहने को बहुत अच्छी बात है, आपने दो वर्ड हिंदुइज्म से ले लिए, एक नीति और न्याय, लेकिन जो न्याय आप देना चाहते हैं, ही टॉक्स ऑफ ऑथराइजेशन एंटाइटलमेंट्स। एंटाइटलमेंट कौन देगा? एंटाइटलमेंट लॉ ही दे सकता है। एंटाइटलमेंट डिस्कशन से, कंसल्टेशन से, रेफरेंडम से, पार्टीजन नहीं होगा। सो व्हाट आई सेड इज these theories are super critical, therefore libertines, but they have not suggested anything concrete on you're going to proceed. इसलिए अमृता सेन साहब की थ्योरी ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, नोबेल प्राइज मिल गया, लेकिन यू कांट बिल्ड ऑन दैट बेसिस, इट्स नॉट पॉसिबल। रेफरेंडम है पॉसिबल स्विट्जरलैंड, इन अ कैंटन, स्मॉल पॉपुलेशन। Can you have referendum, consultation, discussion, participation in the entire country like India? इसका तरीका सिर्फ इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, इसके अलावा कोई नहीं है। Does that answer your question? How to distinguish liberalism and libertarianism? और सवाल पूछिए। Sir, this is the question from my side. Yeah, okay. You were discussing that most of the Hindu philosophical traditions are to be Yeah. found in the works of historians. So my question is, you can also answer this question towards the end. Do you suggest any way or any method
or any approach by which one can develop a sense of Indian legal system apart from what historians have worked on? So do you suggest any approach or any method in this regard? How should we go Now, about it? my simple answer would be that in modern world, as it is, driven by technology, economic growth, it is not possible to revive and implement what was best in Hinduism of bygone days. उसको आप हिस्ट्री तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते, because Hindu law was in fact loaded with too many inequalities. आप मनु कोड पढ़ लीजिए, इनबिल्ट है इसके अंदर इनइक्वालिटी, और उसको प्रमोट किया गया है. सारा सिस्टम हमारा वर्ण सिस्टम पे बेस्ड है, तो उस सिस्टम स्टडी आप कर सकते हैं, उसमें जो अच्छा वो ले लीजिए, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कीप द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल सिस्टम वेयर यू हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड मच. आपने सारा वेस्ट का ही उठाया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वही है. योर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन वेस्टर्न ट्रेडिशन. उसमें हिंदुइज्म का कितना है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी आपने उठाए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हिंदुइज्म में तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर. सो फॉर स्टडी, वेल, it should be conducted, carried on, and Indian writer must analyze it further, and whatever is good may be taken, but then you can't put the pendulum back. बस आप वो नहीं कर सकते. आप एक किताब लिखी थी फुकुयामा ने, उसका नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री. He says after second war, history has ended. History has come to an end. Because earlier there were ideological wars. जितने कॉलोनियल थे, आइडियोलॉजिकल थे. आज की क्या आइडियोलॉजी है? एक ही आइडियोलॉजी है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. Every country's policy is driven by only one consideration, that is economic growth. वो चाहे कम्युनिस्ट चाइना है, चाहे वो रशिया है, या लिबरल वेस्ट है, या इंडियन डेमोक्रेसी है, मेन फोकस ओनली आइडियोलॉजी टुडे इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑल आइडियोलॉजीज आर सेकेंडरी. उसका कोई मतलब आज नहीं है. आज हम मार्क्स की बात नहीं करते. We don't talk about Marx anymore, except in academic circles. So Fukuyama says end of history, and you can't put the pendulum back. लेकिन स्टडी के लिए बहुत एरिया है, क्योंकि हमारे कंट्री बहुत रहा नहीं है. बहुत हिंदुस्तानियों ने हिंदुओं के बारे में नहीं लिखा. हमारी ज्यादातर नॉलेज का सोर्स वेस्टर्न सोर्स ही है. इतना आपको कई नाम गिनाए. अब डेविस है, स्पिरिट ऑफ लॉ, हिंदू लॉ, व्हाट अ वंडरफुल बुक इट इज. जो एनालिसिस उसने किया है, वो एनालिसिस कोई हिंदुस्तानी नहीं कर पाया. या लाइकवाइज ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एनालिसिस ऑस्टिन ने किया है, वो आपका और हिंदुस्तानी नहीं कर पाया कोई. हालांकि बड़ी बड़ी किताबें कौन सी लिखी हैं, सीरवाई भी हैं, दूसरी भी हैं, लेकिन वो किताब नहीं लिख पाया जो उसने लिखी है. इसी तरह सो एनालिटिकल. सो फॉर सेक ऑफ स्टडी, यस, but then you can't revive whatever is not very relevant today. ये मैं कहना चाहता हूँ. And as we go further, you will understand why all that has become outdated and obsolete, which was the core Hinduism in the ancient times. तो मैंने अभी दो बातें आपको बताई. एक, Westerners try to learn about Hindu law. They never learned from Hindu law. हिंदू लॉ से सीखा नहीं उन्होंने कुछ है, हिंदू लॉ के बारे में जरूर सीखा कि हिंदू लॉ क्या है. एंड देयर आल्सो दे लुक्ड एट इट फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, दैट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड लॉ, व्हिच वाज नॉट द इंडियन ट्रेडिशन, जो हिंदू की ट्रेडिशन नहीं थी. दूसरा मैंने आपको बताया सोर्सेस, श्रुति, द वैदिक लिटरेचर. जो वैदिक कॉर्पस है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है. और इस वेद में हम क्या शामिल करते हैं?
इसके अंदर आपके धर्मशास्त्र भी हैं, जो कमेंट्रीज हैं, ओरिजिनल सोर्स नहीं है, दीज आर नॉट ओरिजिनल सोर्सेस। आपके उपनिषद भी हैं, उपनिषद आर इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद, वेदों की इंटरप्रिटेशन उपनिषद में है। सो व्हेन आई से वैदिक कॉर्पस, दिस इंक्लूड्स वेदास, दिस इंक्लूड्स दी धर्मशास्त्रास, दिस इंक्लूड्स जो मैंने अभी कहा उपनिषद, ये सारे सोर्स हैं हिंदू लॉ के, और ये ज्यादातर श्रुति हैं, एक्सेप्ट कमेंट्रीज मेड लेटर लाइक इन उपनिषद एक्सेट्रा। फिर हमारे पुराण हैं। पुराण क्या है? पुराण मेरे ख्याल से 18 हैं, इतने हैं, मुझे याद नहीं है अभी। उन पुराणों में वी टॉक ऑफ गॉड्स, वी टॉक ऑफ किंग्स, वी टॉक ऑफ सेजेस, ऋषिज, एंड वी टॉक ऑफ एपक्स, जो टाइम डिवीजन है, कौन सा युग, कलयुग कब है, इसके पहले के कौन से युग हैं, वो सारे युगों का वर्णन ये पुराण में किया गया है। और पुराण भी बहुत से हैं, कोई विष्णु पुराण है, कोई पता नहीं कितने पुराण हैं। सो ऑल दिस कॉर्पस, ओरिजिनल वेद, ओरिजिनल तो वो भी नहीं है, बिकॉज दे वर ऑल्सो कंपोज लेटर, मच लेटर, एंड देन कमेंटेड धर्मशास्त्रास एंड उपनिषद्स एंड पुराणास। ये सारा मिला के आपका है श्रुति है। सेकंड स्मृति, जो मैंने बताया धर्मशास्त्र है, ये सारी स्मृति है, अपनी मेमोरी से लिखा के ये हिंदू लॉ है। दिस व्हाट वेद आर लाइक, दिस हाउ दे आर इंटरप्रेटेड। उसके बाद आचार और कस्टम है, ये सारे सोर्स मैंने आपको बताए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मैंने केस दिया इसके ऊपर आपको, कि दे ट्राई टू डीलिंक लॉ एंड रिलीजन इवन इन हिंदू लॉ, which is not possible. Now let's come to Hindu theology. इसके बारे में थोड़ा बता चुका हूं कि जो बाकी रिलीजन है वो मोनोथीस्टिक हैं, वो किताबियां हैं, वो रिवील्ड हैं, उनके प्रॉफिट्स हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां कोई पर्सनल गॉड नहीं है, हम तो वेद में यकीन करते हैं। वेद इज इटरनल, इट इज डिवाइन, और गॉड एग्जिस्ट करता है तो वेद के शब्दों में ही वो एग्जिस्ट करता है। प्लीज टेक नोट ऑफ इट, गॉड एग्जिस्ट ओनली इन मंत्राज ऑफ वेद, और वेद मंत्र का उच्चारण ही डिवाइन है, वहीं हम फील करते हैं कि भगवान नामी कोई चीज है। एंड हिंदुइज्म, सम पीपल फील इज मोनोथीस्टिक, कि वो एक ईश्वर में यकीन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं अनेक है, पॉलिथीज्म। कुछ लोग पॉलिथीस्टिक मानते हैं, बिकॉज हमारे यहां कितने देवी देवता हैं। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, एक इंटरप्रिटेशन, that these are only manifestations of the Almighty. ये मुद्राएं हैं, ये इनकारनेशंस हैं, ये इमेजेस हैं, ये रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअल गॉड्स नहीं है। गॉड तो एक ही है। सो हिंदुइज्म एट द एंड ऑफ इट, अकॉर्डिंग टू वैदिक थिंकिंग, इज यूनिटरी, इज मोनोथीस्टिक, इज वन। हालांकि देवी देवता बहुत ज्यादा है। ये हमारी थियोलॉजी का कोर पॉइंट है। इससे आप डिफर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काफी इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोग द्वैतवाद, कुछ अद्वैत, शंकर, दूसरे शंकराचार्य, इन सब ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैनिज्म अलग हो गया, बुद्धिज्म, वो यकीन नहीं करते खुदा में है। तो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं हिंदुइज्म की, और उसके अंदर भी कितने तरह की स्ट्रीम्स हैं। लाइक कोई शिवाइट है, कोई आपका वैष्णवाइट है। देखिए अलग अलग गॉड की पूजा करते हैं वो, लेकिन वो पूजा करने के बाद भी गॉड एक ही है। इवन शंकर भी पूजा करते हैं भगवान की। आर यू गेटिंग मी? शंकर या राम और कृष्ण वो भी अवतार से लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं किसी को दूसरे खुदा का जाए कि ये शिव भक्त हैं। राम प्रभु शिव भक्त थे,
हालांकि राम खुद इनकारनेशन ऑफ गॉड थे. सो देयर आर सो मेनी स्ट्रैंड्स कि ये मोनोलिथिक रिलीजन नहीं है, ये यूनिटरी नहीं है. बट कोर पॉइंट आई थिंक इज मोनिज्म. इट इज मोनोथिस्टिक. ये हमारी थियोलॉजी है. दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, that in Hinduism there was no secular concept of law. हमारे पास लॉ नाम का कोई वर्ड नहीं है, हालांकि हम उसका ट्रांसलेट करते हैं विधि. सेकुलर लॉ कंसेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था, वो था धर्म का. वी हैड धर्म एंड इक्वल धर्म इज ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. धर्म को ही हम लॉ मानते थे. अब ये धर्म क्या है? ये दो वर्ड से बना है. एक है धर और एक है मां. धर मां. धर मीन्स रूट. रूट जो होता है उसको हम धर कहते हैं. ये शायद हिंदी का या संस्कृत का वर्ड होगा. सो धर्म इज फ्रॉम द वर्ड धर, रूट, द ओरिजिनल. दूसरा है मां मीन्स रिटेन. सो रिटेन द रूट. दिस मीन्स प्रिजर्व, सस्टेन, मेंटेन. धर्म का मतलब है टू मेंटेन, टू सस्टेन. और ये दो लेवल पे है. एट कॉस्मिक लेवल, एट यूनिवर्सल लेवल. यूनिवर्सल लेवल में जैसे हमारा धर्म है, इंसानों का धर्म है, फैमिली का धर्म है, ऐसे ही गॉड्स का धर्म भी है. कॉस्मिक बैलेंस इज मेंटेन्ड ओनली व्हेन धर्म इज रिटेन्ड. सो इंडियन हिंदुइज्म का जो कंसेप्ट है वो कॉस्मोस का है, वो सारे यूनिवर्स का है. वो सिर्फ फिजिकल ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नहीं है. इट इज नॉट लिमिटेड टू एग्जिस्टेंस फिजिकली ऑन दिस अर्थ. हम तो उसके बियॉन्ड भी जाते हैं, हम उसके पहले भी जाते हैं. सो कॉस्मिक बैलेंस इज कॉस्मिक धर्म. हमारे गॉड्स हैं, उनके भी धर्म है. हमारा भगवान है, उसका भी धर्म है. सो ये सब धर्म है. और एट इंडिविजुअल लेवल हमारा इंडिविजुअल और फैमिली धर्म है. In fact, Davis has said in the famous book, The Spirit of Hindu Law, उसमें ये कहता है that Hinduism is the theology of life. Is the theology of life. Dharma is all pervasive, is all inclusive. ये आपके टोटल एग्जिस्टेंस को जमीन पर इसके बाद भी कैटर करता है. So it's complete explanation. This is what dharma literally means. So it is law of obligation for everyone at cosmic level and at micro individual level, at family level. और इसका नियरेस्ट है ड्यूटी ऑब्लिगेशन. सो हमारा लॉ धर्म का लॉ है. हमारा लॉ वेस्टर्न लॉ नहीं है. दैट इज टर्म्स ऑफ कैनोनिकल प्रिसेप्ट्स. यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस. ऐसा नहीं है. दिस इज प्रोहिबिटेड, दिस इज परमिटेड. एंड वी कॉल इट स्वधर्म. एवरीवन है स्वधर्म. स्वधर्म में अपना धर्म. ये देवता को भी है, ये इंसान का भी है. ये स्वधर्म है. हर एक का अपना धर्म है. एंड वी मेंटेन एनी डिविएंस, एनी डिपार्चर फ्रॉम धर्म बाय एनीवन, इवन बाय गॉड्स, इज अधर्म. धर्म के रास्ते से एक भटकना, वो जो भी हो, वो अधर्म है. और हर का स्वधर्म है. अब इसका जो कोर पॉइंट है स्वधर्म का, स्वधर्म ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली. क्योंकि डेविस ने कहा हिंदुइज्म अप्लाइज टू हाउस होल्ड्स, नॉट ओनली इंडिविजुअल.
ये पूरे परिवार की थियोलॉजी है, ये इंडिविजुअली नहीं है, ये पूरे परिवार की है, एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट. सो थियोलॉजी ऑफ लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड्स, ये डेविस का व्यू है. सो टू डायलेट इट फर्दर, you see, swadharm consists of two factors. दो फैक्टर से स्वधर्म बनता है. इंसान का, फैमिली का, हाउस होल्ड का, समाज का, जिसका भी स्वधर्म है, उसमें दो फैक्टर होते हैं. वन फैक्टर इज 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिनको आप कहते हैं आश्रमास. 4 आश्रम है हर हिंदू के लाइफ के. वो 4 आश्रम पता ही होंगे आपको. 4 आश्रम में ह्यूमन लाइफ को डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल लाइफ को. तो एक तो आश्रम, 4 आश्रम, ये कोर पॉइंट है धर्म का, हमारे स्वधर्म का. दूसरा है, द सेकेंड इज सोशल क्लासेस, वर्णास. वर्णास भी हमारे धर्म का कोर इशू है. एक तो है मानव जीवन के आश्रम 4, और उसके बाद है आपका सोशल क्लासेस, जिसको आप पता है वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम मीन्स जिसको आप कहते हैं कास्ट सिस्टम. अब ये वर्ण सिस्टम क्यों बना, किस तरह बना, इसकी सोचने हमारे पास नहीं है. किसी ने स्टडी किया भी नहीं है, इसका ओरिजिन किसी को पता नहीं है. कुछ लोग कहते हैं वह डिवीजन ऑफ लेबर विच ऑलरेडी डिस्टॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम. हो सकता है कि लॉ के पेशे डिवाइड किए गए हों, ये डिवीजन ऑफ लेबर हो, लेकिन हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इसका कोई. टुडे वी हैव परवर्ट फॉर्म ऑफ दिस एज कास्ट सिस्टम. वर्ण सिस्टम का एक जो गलत रूप है वो है आपका कास्ट सिस्टम. ये वर्ण सिस्टम क्या था कि आपके 4 वर्ण हैं, तो 4 आश्रम हैं और 4 आपके वर्ण हैं. अब इसको हम कहते हैं धर्म. क्या हुआ, स्वधर्म क्या है? दिस इज वर्णाश्रम. वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, इनको मिला दीजिए, ये बन गया स्वधर्म. तो स्वधर्म में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और ये कोर वैल्यू प्रिंसिपल है हिंदुइज्म का. तो जैसा आपने सवाल पूछा था, आज हम इसको रिवाइव नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में जो वर्ण धर्म था उसको वर्ण को वापस ले आइए, ये तो पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट वी आर फेसिंग वेरी सीरियस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट टेंशंस. हमारा तो सारा सिस्टम ही कास्ट विशिएटेड है, चाहे वो इलेक्शन है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री केमिस्ट्री है, एक यहां से ले लीजिए, एक यहां से ले लीजिए. सारा जो पर्सपेक्टिव वो है, एक ब्यूरोक्रेट है, ये ब्राह्मण ग्रुप का है, ये राजपूत ग्रुप का है, ये पिछड़ा वर्ग है, उनके अपने वर्ग को रिफ्लेक्ट करता है ये, अनफॉर्चुनेटली. सो द कास्ट सिस्टम हैज कलर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी इंडियन एट एवरी स्टेज. ये इसका बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की सोसाइटी में हुआ है, और इसको हम छोड़ नहीं पाए हैं. वी कुड नॉट रिमूव दिस फ्रॉम इंडियन इथॉस. हमारे इथॉस में अभी भी है. हम कितनी अच्छी बातें करें, वेस्टर्न थॉट, प्रोग्रेसिव बातें करें. मुझे एक आईएएस ऑफिसर जो मेरा स्टूडेंट था, उसने कहा सर जब आप लोग हमसे बात करते हैं तो बिल्कुल बात ऐसे करते हैं जैसे हम बराबर हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उधर हुए नहीं, और आप लोग पता क्या कहते हैं कि वो देख रहे हो, वो ये वही है, ये वही है, ये वही है, मीन्स ये शेड्यूल्ड कास्ट है. You see, this one system has done havoc to the Indian society. और इतना बड़ा डिवीजन हुआ कि शायद ये ना होता तो हमारी हिस्ट्री कुछ और होती. This had divided this community for, you see, historically at every point of time.
इसने बहुत बड़ा एक क्लासिफिकेशन और बहुत बड़ी एक गल्फ पैदा कर दिया है बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज। सो ये था हमारा धर्म का कंसेप्ट, स्वधर्म के हर बंदे का स्वधर्म है, गाइडेड बाय दीज टू फैक्टर्स। अब इसका एक फॉर्म जो हमारे पास आता है वो है दैट हाउसहोल्ड लाइफ ट्रेडिशन गवर्न्ड बाय दीज फैक्टर्स। हमारा जो हाउस होल्ड है, घरेलू लाइफ है, वो इन चीजों से गवर्न होती है। एक है sacramental factor is very important in Hindu households. सैक्रामेंट की हिंदी में नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम। सैक्रामेंटल राइट्स, बर्थ है, डेथ है, बर्थ पे डेथ भी सैक्रामेंटल राइट्स किए जाएंगे। कोई कहता है छठ है, कोई कहता है जन्म है, कोई कहता है इसकी पत्री बना दो, कोई कहता है शादी है, कोई कहता है विवाह है, कोई कहता है डेथ है, इसके ऊपर ये करो, ये पिंड दान करो, ये गाय दान करो। ये सारे सैक्रामेंटल हैं बर्थ एंड डेथ के। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ हिंदू हाउस होल्ड। ये भी स्वधर्म के फर्दर डिटेल्स हैं। उसके बाद आपका है डोमेस्टिक राइट्स, पूजा पाठ। हर हिंदू डेली पूजा पाठ करेगा, नहाएगा, पूजा करेगा, तब कोई काम शुरू करेगा। सो मच सो के जो डिवाउट हिंदू हैं वो अगर रामायण और महाभारत देखने के लिए बैठते थे तो पहले नहाते थे, पूजा करते थे। उसके बाद जो राम बनते थे उसको नमस्ते करते थे टेलीविजन पे, और अगर वो मिल जाए तो उसका पैर छूते थे, एज इफ ही इज राम। व्हाई? बिकॉज वी हैव बीन आइडल वर्शिपर्स, वी हैव बीन मेकिंग इमेजेस ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ आइडल्स। हमारे यहां आइडल वर्शिप रही है। सो ए डोमेस्टिक पार्ट जो है पूजा, ये राइट्स भी हिंदुइज्म का इसेंशियल कोर है। देन फिजिकल एक्शन टू मीट फिजिकल नीड्स। आपकी जो जरूरतें फिजिकल, खाना है, कपड़ा है, मकान है, इसके लिए भी। और वहां भी हमारा एक बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है जो हिंदुइज्म में रहा है। हिंदुइज्म में लक्ष्मी पूजा तो करते हैं हम जो, लेकिन हमारी वर्क कल्चर बहुत पुअर है। हम वर्क करके नहीं कमाना चाहते। वर्क कल्चर इज वेरी पुअर, कि उतना कमाओ जिससे गुजारा चल जाए। सिंपल रहो, झोंपड़ी में रहो, लंगोटी बांध लो, रूखा सूखा खा लो। ये हमारा फोकस नहीं रहा है। मेटीरियल ग्रोथ, एडवांसमेंट, ये हम हिंदू का फोकस नहीं रहा कभी भी। हिंदू तो पैदाइशी एस्थेटिक है, उसके अंदर तो कुछ जो ये संत मंत होते हैं उनके भाव ऑलरेडी होते हैं। एक्सेप्ट द वैष्णवास जो बिजनेस क्लास थी। बिजनेस क्लास विल लुक फॉर मनी, बट अदर्स वुड बी बिजी विद देयर ओन अफेयर्स, बिकॉज ड्यूटी अलॉटेड देम अंडर देयर धर्म। जो उनका स्वधर्म है उसमें क्षत्रिय क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा। शूद्र बिजनेस नहीं कर सकता, शूद्र पढ़ नहीं सकता, पंडित लड़ नहीं सकता, खत्री सिर्फ लड़ना जानता है। You see, this divide, in fact, ensured that progress was stalled. तो ये भी आपके कोर हिंदू वैल्यूज का एक पार्ट है स्वधर्म का। देन सोशल एस्पेक्ट्स हैं आपके। सोशल एस्पेक्ट्स मैंने बता दिया, वर्ण सिस्टम। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड सिस्टम कोर प्रिंसिपल है, ये रहा है। और एक है एक्सपायटरी। एक्सपायटरी मीन्स प्योरिफिकेशन। हर हिंदू का यह धर्म है, स्वधर्म है, कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करे और पापों को धोए, और उसके लिए केदारनाथ जाए, चाहे केदारनाथ में फ्लड में बह ही जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है
कि जितने भक्त लोग मरते हैं उतने दूसरे नहीं मरते। भक्ता का सफाया तो सैकड़ों में होता है। हरिद्वार गए वहां मर गए, कुंभ में गए हजारों मर गए, केदारनाथ में बह गए। लेकिन ये एक्सपायट्री भी हमारे स्वधर्म का पार्ट है कि आप अपनी सोल के प्योरिफिकेशन के लिए, आप अपने पापों का नष्ट करने के लिए आप तीर्थ यात्रा कीजिए। डिफरेंट धाम हैं, उन धाम पे जाइए। बहुत से लोग धाम पे जाने से पहले मर जाते हैं, बहुत से धाम पे मर जाते हैं, बहुत से वापस आते मर जाते हैं। और उनको ये कहा गया है कि मोक्ष लेना है तो वाराणसी में जाके मरिए। वाराणसी द होलीएस्ट सिटी अंडर हिंदू पैंथियन। उसमें ये कहते हैं कि जो वाराणसी मरेगा काशी में वो स्वर्ग में जाएगा। तो कबीर दास ने पूछा कि भाई काशी मरने स्वर्ग मिलता है, कहां मरने से नरक मिलता है? उसको बताया गया कि गांव है मगर, जो बना से थोड़ी दूर है, वहां जो मरता है उसको नरक मिलता है। तो कहते हैं कबीर दास मगर में ही जाके मरे, वो काशी में नहीं मरे। सो एक्सपायट्री प्योरिफिकेशन, ये सैक्रामेंट भी हिंदुइज्म का कोर प्रिंसिपल है। सो दिस मीन्स के एंटायर कॉस्मोस, यूनिवर्स, एंटायर ह्यूमन लाइफ, एंटायर हाउसहोल्ड, एंटायर कॉमेडी लाइफ is governed by Swadharma. For everybody, duties are detailed out. सबकी धर्म और प्रेस्क्राइब ड्यूटी की हुई है। ये आपका हिंदू कोड ऑफ धर्म इन ब्रीफ। राजा का राजधर्म है। Now king is not a lawmaker. किंग वील से डंडा, इसको कहते हैं दंड। डंडा ये नहीं कि लाठी उठा लो, इट इज दंड। दंड को कहते हैं सेप्चर। देखो ना, कोरोनेशन में किंग को एक सेप्चर दिया जाता है। दिस सेप्चर इज सिंबॉलिक ऑफ दंड पनिशमेंट, दैट किंग एडमिनिस्टर पनिशमेंट दोज हु कमिट अधर्म। जो अधर्म कमिट करते हैं उनको दंड देना काम किंग का है। ये हमारा सिस्टम था। इट इज नॉट लाइक वेस्ट दैट किंग इज द मेकर ऑफ लॉ। किंग इज नॉट द मेकर ऑफ लॉ हियर। धर्म इज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड। King cannot change it. King cannot add to it. King cannot create new dharma. King will simply enforce. And on dharma, whenever he needs any advice. तो एक लंबी सी दाढ़ी वाले बैठे होते हैं, रामायण महाभारत में देखिए, उनको कहते हैं धर्माचार्य। तो जहां भी इशू धर्म का होगा वहां पे धर्माचार्य अपना विचार देंगे और धर्माचार्य का विचार ही माना जाएगा, किंग का नहीं, धर्माचार्य का। So this is how there is swadharma for anybody. This is what dharma means according to Hinduism. When I say Hinduism, I say this is Vedic religion. Hinduism तो बात की बात है। तो ये उन्होंने कहा है। Now, as Davis has said, that dharma governs life of the individual, life of the household, life of the community, and this takes care of things even after one is no more, even spiritual matters. Spiritual matters को भी धर्म ही गवर्न करता है। इसीलिए जितने आपके सैक्रामेंट हैं, जितने आपके रिचुअल्स हैं, वो भी प्रेस्क्राइब्ड हैं एज नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी धर्म अंडर हिंदुइज्म। ये आपकी थियोलॉजी एंड धर्म का कंसेप्ट। सो हमारे यहां सेकुलर कंसेप्ट लॉ का नहीं था। अब आइए हिंदू एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स टू रीच द ट्रुथ, द फाउंडेशन, द नेचर, द नॉलेज। कि आप चीजों की अल्टीमेट नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ नो द रियल थिंग्स।
इसको कैसे करेंगे आप जी? इसके लिए मैंने आपको दो चीजें ऑलरेडी बताई। वन इज साइंटिफिक मेथड, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। सेकंड इज फिलोसॉफिकल, इमैनुअल कांट। Why we call it metaphysical? Meta means beyond matter. Metaphysical theories. Inward transcendence by Immanuel Kant. वो वेस्ट की बात है। हमारे यहां to reach the reality, to know things, which we call epistology, Hindu epistology. इसके कौन से तरीके हैं? इसको जानने क्या तरीके हैं? What are the means? What do you employ? इसके कई तरीके बताए गए हैं हिंदुइज्म में। पहला है द फॉलोइंग, इसको कहता है प्रत्यक्ष। वन मोड इज प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष है, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन एंड कॉग्निशन। दिस इज वन वे टू नो अबाउट थिंग्स, अबाउट द रियलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ वन लर्न्स दैट फायर विल बर्न, सो अवॉइड इट। फ्लड विल ड्राउन, अवॉइड इट। स्नेक इज पॉइजनस, so avoid it. You see this प्रत्यक्ष, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख के चीजों की नेचर, उनके बारे में जानते हैं कि फ्लड क्या है और अर्थक्वेक क्या है और सांप क्या है और टाइगर क्या है और जंगल क्या है और जो भी चीजें हैं, ये सारा एक्सपीरियंस है। ये है प्रत्यक्ष, जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है। एक तरीका ये है। इंसिडेंटली कन्फ्यूशियस, a Chinese philosopher, he had said there are 4 ways of acquiring wisdom. Wisdom के 4 तरीके हैं, 3 या 4 तरीके हैं। नंबर 1, experience, trial and error. एक्सपीरियंस में गलती होगी, पेन भी होगा, गलती करोगे, सीखोगे। तो एक तो आप एक्सपीरियंस सीखते हैं, प्रत्यक्ष जो है उसको देख के सीखते हैं। दिस वन वे। Confuse also says that experience, trial and error is one method of becoming wise. Second method is imitation. ये Confucius कहता है, जो दूसरे कर रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए। This is the easiest and less painful. दूसरों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, उनको इमिटेट कर लीजिए। जैसे किसी ने कहा कि किस रास्ते जाना चाहिए, जिस रास्ते से महाजन गए हों वही रास्ता सबसे सुगम है। मतलब यह है कि महाजन लोग इंटेलिजेंट हैं, जो रास्ता चुनेगा बढ़िया ही होगा, तो उन्हीं के रास्ते पर चल दीजिए, तो आप सुखी रहेंगे। ये है इमिटेशन। इमिटेशन इज लीस्ट पेनफुल, इज द इजिएस्ट। एक ये तरीका भी है विजडम जानने का। थर्ड कहता है स्पेकुलेशन, थिंकिंग, दैट्स द बेस्ट। मेंटल थिंकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्वायरिंग विजडम, ये कन्फ्यूशियस कहता है। तो इन हिंदू एपिस्टेमोलॉजी, आई एम ट्राइंग टू कंपेयर दैट वी आर समवेयर नियर in terms of these modes and means under Hinduism to what Confucius said earlier, that experience, imitation and speculation, thinking. So in our case, first is pratyaksh, जो आपको नजर आ रहा है, जो आप देख रहे हैं। This means observation and cognition. It is not to see, draw conclusions, be wise, learn. This is analysis, cognition. This is प्रत्यक्ष। दूसरा सिस्टम है अनुपमा। अनुपमा हिंदी का वर्ड है। अनुपमा मतलब है इन्फरेंस। You draw many inferences. So inference one way. For example, आपकी लीगल प्रिजम्पशंस हैं,
ये क्या है? These legal presumptions are inferences from observed phenomena. तो आप प्रिजम्पशन कर लेते हैं, लाइक किसी आदमी के पास अगर चोरी का सामान पकड़ा गया तो आपकी इन्फ्रेंस क्या होगी, प्रिजम्पशन क्या होगी? या तो इसने चोरी की है या इसने चोरी का सामान रखा हुआ है, ये प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो दिस इन्फ्रेंस से भी आप सीखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करिए, उसे इन्फर करिए. तो अनुपमा is another method of acquiring knowledge about things, epistemology. इसकी एग्जांपल आपके लॉ में बहुत काफी है. सेक्शन 112, a child born during wedlock or within 280 days of dissolution of marriage, the lady remaining unmarried shall be conclusively presumed to be legitimate. अब एक कहता है, एक को पूछे तुम्हारा फादर कौन है, वो कहता है मेरा फादर एक्स है. भाई तुम्हें कैसे पता एक्स है? कहना साहब सब कहते हैं, मेरे रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त कहते हैं, माँ कहती है, टीचर कहते हैं, मेरा नाम लिखा स्टडी में लिखा हुआ है. सो वी बिलीव एंड वी आर ऑल सन्स ऑफ आवर फादर्स. बट फैक्ट इज दैट सम ऑफ देम may not be. Some of them may not be. Only mother knows whose child is this. मदर के अलावा किसी को पता नहीं हो सकता है कि इस बच्चे का फादर कौन है, लेकिन सब अपने फादर के बच्चे हैं. प्रिजम्पशन, इन्फरेंस. सो अनुपमा अकॉर्डिंग हिंदू पैंजी रिलीजन इज अनदर method of acquiring wisdom to know about things, the reality. The third is, इसको कहते हैं उपमना. पहला था अनुपमा, अनुमना, सॉरी अनुमना, नॉट अनुपमा, अनुमना. तीसरा है उपमना, उपमना. उपमना means analogy. Analogy means comparison. You compare things and through that you acquire wisdom. To give a very small simple example, you call a person a tiger, शेर पंजाब. कोई इंसान टाइगर नहीं हो सकता. आप टाइगर क्यों कहते हैं? ये शेर पंजाब क्यों है? ये शेर पंजाब इसलिए है कि इसमें शेर लाइक क्वालिटी है. तो जिसके अंदर शेर लाइक क्वालिटी है उसको आप शेर कह दो. आज एक प्रेफिक्स लगाते हैं लोग पंजाब में खासतौर से, ज्ञानी. बिल्कुल अनपढ़ उसका कहें ज्ञानी जी. बिल्कुल अनपढ़ पंडित, पंडित जी. पंडित जी मीन्स पढ़ा लिखा इंसान. लेकिन हर ब्राह्मण पंडित है और हर सिख ज्ञानी है. एक मजदूर बेचारा जो खोदता है जमीन, उसको भी कहते हैं ज्ञानी जी. और एक और सिस्टम लगाया हुआ है कि बहुत से नेता ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, जो अपने नाम के पहले लगाते हैं प्रोफेसर. स्कूल नहीं गए कभी, लेकिन हैं प्रोफेसर. प्रोफेसर सच एंड सच, बिकॉज ए वेरी अट्रैक्टिव प्रीफिक्स. सो एनालॉजी से भी आप कर सकते हैं कि ये आदमी शेर है, ये आदमी गीदड़ है. ये एनालॉजी है एट वेरी सिंपल लेवल, जस्ट इलस्ट्रेशन. Then the fourth is arthpatti. Arthpatti. Arthpatti means postulation. To postulate means to think, to analyze. इसका विश्लेषण करिए. इस विश्लेषण, ये मेंटल एक्टिविटी है विश्लेषण. जो विश्लेषण चीजों आप करते हैं, अब आप थीसिस लिखते हैं तो उसके अंदर काफी एनालिसिस आप करते हैं, ये पॉस्टुलेशन है. ये अर्थपत्ति की स्टेज है. इससे आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, नया ज्ञान बढ़ाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं. ये सारी आपकी रिसर्च का फोकस यही होता है
कि हम ह्यूमन नॉलेज में कुछ ना कुछ जोड़ दें। और जो आपको डिग्री मिलती है उसका पर्पस भी ये है, उसमें एक सवाल यही पूछा जाता है कि हैज दिस थीसिस कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक तो ये है, और हैज इट गिवन अस अ न्यू इंटरप्रिटेशन टू द एग्जिस्टिंग रूल्स। तो अगर इन दो टेस्ट में आप पास होते हैं तो आपकी थीसिस एक्सेप्ट हो जाती है। यही पर्पस थीसिस का है। सो आप जो पढ़े लिखे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं उसमें लॉट ऑफ पॉस्टुलेशन गोस। ये है अर्थपत्ति। और लास्ट ये है पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदुइज्म है, शब्द। शब्द का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसकी काफी इंटरप्रिटेशन हिंदू ज्यूरिस्ट ने दी है कि शब्द उच्चारण is the highest divine activity. So much so that God does not exist in personal form. God exists in mantras only. God का वास सिर्फ मंत्रों में है। मंत्र का उच्चारण करना ही डिविनिटी पहुंचना है। इसका इतना बड़ा अर्थ है हिंदुइज्म में। सो शब्द है द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। रिसाइटेशन ऑफ, अब उसको आप श्लोक कहेंगे या मंत्र कहेंगे, जो भी आप कहते हैं, उनका उच्चारण, शब्द उच्चारण, इससे भी विस्डम मिलती है। यू रीच नियर डिविनिटी। और जैसा मैंने बताया, बिलीफ ये है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम वेद, गॉड एग्जिस्ट ओनली इन द मंत्रास ऑफ वेद। When we recite Ved, this is godly. Ved are eternal, infallible, authorless. वेदों किसी ने लिखा नहीं है, ये डिवाइन है, लेकिन इनको लिखा नहीं है किसी ने। They are not revealed to any prophet like in Islam or in Christianity. अब ये कहां से आए हमें नहीं पता। इनकी कंपोजिशन की गई है बाद में, वो उससे स्मृति से, श्रुति से, वेदवाद जो भी जिसने लिखा हो उन्होंने लिखा, लेकिन उत्पत्ति कहां से आई? वी बिलीव इज डिवाइन। गॉड एग्जिस्ट ओनली इन शब्द उच्चारण। ये भी एक हिंदू एपिस्टोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कन्फ्यूज ने 3 बताए, तो हिंदू एपिस्टोलॉजी में 5 तरीके हैं जिससे आप विजडम, नॉलेज और अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं। और इसमें कहीं एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक वो नहीं है। दिस इज ऑल मेंटल एक्टिविटी। दिस इज ऑल इनफैक्ट नॉन साइंटिफिक। इसमें फिलोसॉफिकल सारा है, ये इसमें साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं दैट हिंदुइज्म इज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन, और उसके तर्क भी वो देते हैं। खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अगर हम साइंटिफिक होते, हिंदू अगर साइंटिफिक होता, तो हिंदू आज दलित नहीं होता, दुनिया का सबसे पिछड़ा गरीब हिंदू नहीं होता, हिंदू कहीं और होता। लेकिन हिंदुइज्म में साइंटिफिक रहा ही नहीं। हमारी सोशल जो लाइफ आज भी गवर्न किससे होती है? गंडे तबीज, जन्म पत्री, कुंडली, राशि, मिथ्स, पूजा पाठ, पंडित, संत, ये सब क्या करते हैं? ये सब आपको हजारों साल से बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनाते रहेंगे। और आज भी जो कॉमन आदमी है वो उसी से उसकी लाइफ चलती है। उसकी लाइफ साइंटिफिक टेम्पर से नहीं चलती। लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी है, लेकिन नोबडी केयर्स फॉर इट एक्सेप्ट द एजुकेटेड एलीट। Vast majority Hindus are governed still by those myths and false beliefs. तो हमारा टेम्पर साइंटिफिक बिल्कुल नहीं था। हमारे तो रास्ते ये थे जो हिंदुइज्म में बताए गए। दिस इज हिंदू एपिस्टेमोलॉजी। अब बाद में क्या हुआ कि जो वेद हमारे थे, इनका इंटरप्रिटेशन किया गया, इनका विश्लेषण किया गया। इस विषय को कहते हैं मीमांसा, हिंदू मीमांसा। मीमांसा है मन से,
मन. मन means thinking. So मीमांसा means analytical thinking. और इनमें क्या किया गया है, इनमें वेदों का जो वेद आपका कॉर्पस है उनका विश्लेषण किया गया है, उनका इंटरप्रिटेशन किया गया है. मीमांसा दो तरह की है, 2 टाइप्स. वन इज पूर्व मीमांसा. पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का एक और नाम है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद, रिचुअल्स, एक्शन, इसको कर्मकांड भी कहते हैं. जो पूर्व मीमांसा है उसको हम कर्मकांड, कर्मकांड इसको कहा जाता है. ये पूर्व मीमांसा मीन्स प्रायर, प्रायर नॉलेज, जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो वेद में है, जो वेद ने कहा है वो करिए. इनको नहीं रिचुअल्स, उसको कहते हैं हम, मीमांसा का वो पार्ट है जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं. इसके बाद है उत्तर मीमांसा. उत्तर मीमांसा मीन्स जो बाद में इंटरप्रिटेशन की गई, पोस्टीरियर, लेटर. पूर्व मीमांसा मीन्स प्रायर, प्रीवियस. उत्तर मीन्स पोस्ट, लेटर. सो लेटर मीमांसा इज नोन एज उत्तर मीमांसा. उत्तर मीमांसा को हम कहते हैं वेदांत, वेद अंत, वेद का आखिर. वेदों का नहीं है ना कि वेद खत्म हो जाए. वेदांता मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद, फाइनल इंटरप्रिटेशन, लेटर इंटरप्रिटेशन. वी कॉल इट वेदांता. और जो आपके उपनिषद हैं, ये सारे उपनिषद हैं वेदांत. इन्हीं के थ्रू वेदांता फिलॉसफी हुई है, उपनिषद के थ्रू. सो यू मे कॉल वेदांत और उपनिषद, इसको कहते हैं पोस्ट और उत्तर मीमांसा. ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद अकॉर्डिंग टू हिंदू पैंथियन, अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन. तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा समझ गए होंगे एपिस्टेमोलॉजी के हम रियलिटी तक जानने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं. तो 5 तरीके आपको बताए हैं. उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद, मीमांसा 2 तरह की है, 2, एक पूर्व मीमांसा है, एक लेटर मीमांसा है. और वेदांत फिलॉसफी का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है कृष्ण. कृष्ण इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ वेदांत. वेदांत फिलॉसफी, द वेद फिलॉसफी, उसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता में उसका सार दिया है. दैट इज ही इज द फाउंडर ऑफ वेदांत. तो ये आपकी उत्तर मीमांसा है, वेदांता है. अब वेदांता, इसके जो मीमांसा है, इसकी हाइलाइट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, वो भी मैं जानना चाहिए इन ब्रीफ. वन इज दैट देयर इज नो गॉड इन पर्सन. ये मैं बता चुका हूं आपको. हिंदू ये नहीं मानते कि खुदा वो है जो आसमान में बैठा हुआ है, जो प्रॉफिट भेजता है, जो डिवाइन लॉ रिवील करता है, जो बाइबल और इस्लाम के कुरान में है, वो नहीं. ऐसा कोई खुद हमारे पास नहीं है. सो मीमांसास और हिंदुइज्म इज बोथ एथिस्टिक एंड थीस्टिक. हिंदू भगवान में यकीन करता भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो यकीन नहीं करते. कुछ कहते हैं हिंदू रिलीजन एथिस्टिक, कुछ कहते हैं नहीं, इट इज थीस्टिक. सो मैं उस कंट्रोल से नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत अलग अलग विचारधाराएं हैं. किसी ने कहा हिंदू रिलीजन जो है वो भगवान को मानता है, किसी ने हिंदू रिलीजन भगवान नहीं मानता. लेकिन ये पक्की बात है कि बुद्धिज्म में और जैनिज्म में भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं. जैनिज्म तीर्थंकर, एलिवेट योरसेल्फ दैट लेवल वेयर यू रीच डिविनिटी, आप खुद ही खुदा हो जाएंगे. इसी तरह निर्वाण, बुद्धिज्म, निर्वाण द सुप्रीम ब्लिस वेयर यू बिकम डिवाइन. बाकी भगवान की नहीं करता बुद्ध जैन, वो तो मिडिल पाथ कहता है, ऑर्डिनरी लाइफ रहिए, निर्वाण प्राप्त तब भी कर सकते हैं. 8 सूत्र बताए उसने जैन. दैट इज बुद्धिज्म, वो भी हिंदुइज्म पार्ट है. जैनिज्म भी और पार्ट है. कृष्ण
कृष्ण ने ये कहा मैं ही भगवान हूं, आई एम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये जो ब्रह्म है इसको लोग कहते हैं कि ब्रह्म एक भगवान है। ब्रह्म को हिंदू गॉड मानता है, नहीं। वी बिलीव इन सोल, द इटरनल सोल, जिसको ब्रह्म भी कहा जाता है। सोल को हिंदुइज्म में ब्रह्म भी कहा जाता है। और कृष्ण ने कहा आई एम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। अब मुझे संस्कृत श्लोक याद नहीं है, एम ब्रह्म स्वामी जो भी इसने कहा हो, मुझे संस्कृत याद नहीं आ रही अभी जाए, लेकिन हम बिलीव करते हैं सोल, दैट सोल इज इटर्नल, सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल। वी बिलीव इन रीबर्थ, माइग्रेशन ऑफ सोल। हम सोल के माइग्रेशन में बिलीव करते हैं। हम पर्सनलाइज गॉड में यकीन नहीं करते। ये मीमांसा की एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो हमारे उन्होंने की है। ये बता चुका हूं कि असली डिवाइन शक्ति मंत्रों में है। मंत्रों के अलावा ना कोई खुदा है, मंत्रों में ही खुदा है। इट इज डिवाइन व्हेन इट राउंड्स, तो मंत्र की पावर डिवाइन पावर है, ये हिंदू पैंथन कहता है। धर्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। देन वेदास आर इटर्नल, इनको कहते हैं सनातन। हिंदू धर्म को सनातन भी कहा जाता है। सनातन मीन्स जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो इटर्नल है, जो परमानेंट है, लाइक वेद। सो दे बिलीव and therefore Ved are authoritative, they are authorless। इनको किसी ने लिखा नहीं है, ये तो कंपोज किया है। इसमें डिफरेंस है, ये वेद किसी के रचित नहीं है। वेद को सिर्फ श्रुति से और स्मृति से कंपाइल किया गया है कि ये वेदों में है, तो उसको लिख दिया। सो दे आर ऑथरलेस, इनफॉलिबल, इटर्नल, बियॉन्ड क्वेश्चन। ये हिंदुइज्म बिलीव करता है। दीज आर द मेन हाइलाइट्स ऑफ हिंदू मीमांसा इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद। अब हमने हिंदू रिलीजन, थियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, हिंदू लॉ, धर्म, धर्म सबके लिए है, ये कॉस्मिक है, ये पूरे एग्जिस्टेंस, पूरी लाइफ को गवर्न करता है, आफ्टर लाइफ भी गवर्न करता है। दीज हाइलाइट्स आई हैव गिवन इन ब्रीफ। इसके बारे में कोई सवाल हो तो मेरे से आप पूछ लीजिए। बिफोर आई स्टार्ट विद डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ, बताइए कोई सवाल अगर है तो आई लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। Sir, good evening. I have Yes. one question. Yes. What is the purpose of life under the Hindu philosophy, mythology, whatever it is? What is the Purpose of purpose life is that you should free yourself from cycle of birth and death, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष means you do not have to go through the rigor of birth and death again and again. So your soul become eternal and you shall be free from this cycle. So मोक्ष की प्राप्ति अल्टीमेट एम है हिंदुइज्म का, हिंदू रिलीजन का। ये मेरा ब्रीफ आंसर इसका होगा। मोक्ष का कंसेप्ट हमारे यहां है, बुद्धिज्म में निर्वाण का है। निर्वाण भी वही स्थिति है जिसमें आप इस दूर से परे हो जाते हैं। और कोई सवाल आपका? एनी अदर क्वेश्चन? इफ नॉट, लेट्स कम टू द डिफरेंसेस एंड सम ऑफ द सिमिलरिटीज व्हेन यू फाइंड एनी। अगर कहीं हम ढूंढ सकते हैं तो उन सिमिलरिटी की बात भी हम करेंगे। एक डिफरेंस ये है, वन, दैट द लीगल सिस्टम ऑफ वेस्ट इज ए रेशनल कंस्ट्रक्ट। ये मैं आपको बता चुका हूं, इज ए रेशनल कंस्ट्रक्ट एंड दिस वेरी फॉर्मल सिस्टम, दैट इज स्टेट, organized government, legal system, its enforcement, and then they are sanctioned by force. So their system is adversarial. There is a concept of right and wrong.
ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये मेरा राइट है, ये आपकी ड्यूटी है, ऐसा कंसेप्ट हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म डज नॉट बिलीव इन ऑल दिस। सो रेशलिस्ट, फॉर्मल, विद सैंक्शंस, पनिशमेंट्स, विद सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये कंसेप्ट हिंदू सिस्टम में नहीं है। ये ड्यूरिंग डिस्कशन आपको क्लियर हो भी गया होगा कि हमारे यहाँ राजा सिर्फ लॉ को एडमिनिस्टर करता है, अप्लाई करता है, लॉ बनाता नहीं है। वहां पे लॉ स्टेट ही बनाती है। हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है। हमारे यहाँ तो लॉ दे दिया, ऊपर से वेद आ गए, वो वेद ही लॉ है, वो ही रहेगा। इसके अलावा मैंने कोई एडिशन नहीं की इसके अंदर जो है, सिवाय 1955 में जब मैंने हिंदू लॉ कोडिफाई करना शुरू किया। सो एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हम ये मान के चलते हैं, जैसे वो बिलीव करते हैं मोनोथीज्म है, खुदा है। हमारा रिलीजन ना किताबिया है ना रिवील्ड है। हमारी को किताब भी नहीं है। वेद हमारी रिलीज किताब नहीं है। हमारे तो उपनिषद भी हैं, हमारे पुराण भी हैं, हमारी तो गीता भी है, हमारी महाभारत में रामायण भी है, कमेंट्रीज भी हैं, हमारे धर्मसूत्र शास्त्र भी हैं, हमारे बहुत से कॉर्पस है। सो हमारा रिलीजन रिवील्ड नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव डाइवर्स स्ट्रीम्स of thoughts, diverse systems of worship, diverse gods, and we have even diverse systems of law. आप हिंदुस्तान की ट्राइब्स में जाइए, वो हिंदूज हैं, लेकिन सारे ट्राइबल लॉज डिफरेंट हैं। सो हिंदुइज्म बिलीव्स इन प्लुरलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्स सिस्टम्स ऑफ लॉ। वेस्ट का कंसेप्ट है लॉ यूनिवर्सल है, लॉ परमानेंट है, लॉ मैन मेड है, लॉ आर्टिफिशियल है, लॉ की सैंक्शंस हैं, लॉ के पनिशमेंट्स हैं। नो, इट इज नॉट सो हियर। सो हिंदुइज्म बिलीव्स इन डाइवर्सिटी, वी एसिमिलेट ऑल। हम कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते, हम किसी को हिंदुइज्म अडॉप्ट करने कंपेल नहीं करते, उसे परसुएड भी नहीं करते। ये आपका अपना डिसीजन है। हम तो मान के चलते हैं कि जो स्वधर्म को फॉलो करता है वो हिंदू है, बस हमारा तो यहीं तक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन पनिशमेंट्स, हम पनिशमेंट्स क्या देते हैं हिंदू लॉ में, वेस्टर्न पनिशमेंट्स क्या है? You see, in Western theology, there is a concept of God and devil. खुदा में और शैतान में लड़ाई चलती रहती है। ये कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी का, ये इस्लाम का भी है, ये जुडाइज्म का भी है। एंड दे हैव अ कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये शैतान है, ये भगवान है। ऐसा कंसेप्ट इंडिया में नहीं है। हिंदुइज्म में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि देयर इज गॉड एंड देयर इज शैतान और उनके अंदर ऑनगोइंग वार है। हमारे यहां तो शैतान को भी कंसीडर किया जाता है। वी आर नॉट ऑलवेज हॉस्टाइल टू शैतान, हम शैतान की भी रेस्पेक्ट करते हैं और कुछ जगह शैतान को पूजा भी जाता है। ये नहीं है कि हमारे वही खुदा हैं जिनकी मूर्ति बना के पूजते हैं, हम तो शैतान की पूजा भी करते हैं। शैतान मीन्स वन ए डिविएटेड फ्रॉम पाथ ऑफ धर्म, जिसने थोड़ा अधर्म किया है और हम उसको माफ कर देते हैं। हमारे पनिशमेंट है जेल भेज दो, सर काट दो, ऐसा पनिशमेंट नहीं है हिंदुइज्म में। Hinduism, whenever dispute arises, a question of adharma arises, our system is conciliatory. Please understand. It is conciliatory. It is not adversarial. Conciliatory क्या है कि सोसाइटी की पंचायत होगी, पंचायत में रॉन्ग डूअर को खड़ा किया जाएगा, उसने रॉन्ग डूइंग्स के बारे में बताया जाएगा,
और उस पंचायत में जो डिस्प्यूट है उसको हम रिकॉन्साइल करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, पंचायत फैसला करने की कोशिश करेगी दोनों की रजामंदी से। वो कोर्ट जजमेंट नहीं देगी। और अगर किसी ने उस पंचायत का वो नहीं माना तो उसको सजा भी मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? जेल नहीं भेजेंगे, सर नहीं काटेंगे, उसको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, उसको समाज से बाहर फेंक दिया जाएगा। You will take away all his civil rights. He will no more be treated as a member of the society. क्योंकि उसने रॉन्ग डूइंग किया है। कभी कभी हम उस पर कोई फाइन लगा देंगे। उसने फाइन दे दिया, उसने माफी मांग ली, प्रायश्चित। एक प्रायश्चित भी हिंदू सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। जिसने प्रायश्चित कर लिया, समाज ने माफ कर दिया, वो इनोसेंट हो गया। कुछ फाइन लगा दिया, सीरियस एक्स कम्युनिकेट कर दिया। हमारे यहां ये सजाएं थी और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन था। तो हमारा सिस्टम तकरार नहीं था, हमारा सिस्टम इकरार था। पनिशमेंट को कबूल करिए, इकरार करिए। आपने गलती की है, आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, उस पनिशमेंट का इकरार करिए। जो फैसला कौन किया है उसको एक्सेप्ट करिए। पंच परमेश्वर, उनका फैसला मानिए। ये हमारा सिस्टम था। जब अंग्रेज यहां आया, उसने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया पंचायत सिस्टम, दूसरा डिस्ट्रॉय किया हमारा स्कूल सिस्टम। जो हमारे स्कूल सिस्टम था पुराना, वो पाठशाला जो भी कहते हैं उसको आप जान, वो सिस्टम खत्म कर दिया। अंग्रेजी वो लाइए सिस्टम एजुकेशन। उसके बाद थर्ड किया कि इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म कर दीजिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम सबसे बढ़िया इंश्योरेंस था दुनिया का, सबसे बढ़िया सोशल सिक्योरिटी जॉइंट फैमिली थी, उसको खत्म कर दीजिए। उन्होंने एक लॉ बनाया, कुछ लोगों के साथ पता होगा, केन्स ऑफ लर्निंग्स एक्ट। उसका मुझे ईयर याद नहीं है। केन्स ऑफ लर्निंग्स एक्ट। जिन्होंने अंग्रेजी भाषा पढ़ी, अंग्रेजी शिक्षा ली, बाबू बन गए, तो उसकी तनख्वाह केन्स ऑफ लर्निंग है, उसको वो अलग रख सकता है। वो फैमिली किटी में नहीं जाएगी। इसका मतलब आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम तोड़ दिया। जॉइंट फैमिली से अपने हिस्से की जमीन का फसल तो ले लीजिए, लेकिन तनख्वाह फैमिली को मत दीजिए। जॉइंट सिस्टम क्या था? कुछ लोग कमाते थे, कुछ लोग नहीं कमाते थे। जो कमाते थे सारी कमाई एक बास्केट में होती थी, उससे सबकी जरूरत मीट होती थी। रोटी एक है तो एक पार्ट सबको दे दिया, सबका गुजारा हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। ना एटॉमिक फैमिलीज, डिस्ट्रॉय जॉइंट फैमिली सिस्टम। इसीलिए अब आप करते हैं इंश्योरेंस। जॉइंट फैमिली इंश्योरेंस जरूरत नहीं थी। बाप मर गया, बच्चे की परवरिश फिर भी होगी, उसकी अपब्रिंगिंग होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, उसकी शादी भी की जाएगी। कुछ कोई पता नहीं चलेगा जवान होने तक कि मेरा बाप मर गया था। ये था जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो सिस्टम आज नहीं है। आज सिस्टम है इंश्योरेंस। रिस्क बहुत बड़ी है। अगर कुछ हो गया तो डेस्टिट्यूट हो जाए फैमिली, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कराइए जाके। इसी दिस इज हाउ, इसी आवर वैल्यू सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न। ना तो हम मेटलिस्ट थे, हम तो इनवर्ड लुकिंग थे। हम पैसे के पीछे नहीं थे, मेटल गेन के पीछे नहीं थे। हमारा जॉइंट सिस्टम था, कॉन्सिलेटरी था, इकरार था। हमारा सिस्टम वेस्टर्न नहीं था। यू नो द मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी। एक ये डिफरेंस है दोनों में। देन हम करते थे, वो करते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज लॉ इज सुप्रीम। whatever law is made, this should governance should be by law.
the rule of law. अब rule of law नाजी जर्मनी में भी था. In Nazi Germany, Hitler was elected. उसने coup नहीं किया था. He had a parliament, Reich. He made laws which were unjust, discriminatory. He killed 6 million Jews. लेकिन अगर टेक्निकली देखें, he was governing under the law. That was a law which was valid because it was made by General Reich. They had the power under the constitution to make laws. Those laws were valid, although undesirable. तो वेस्ट रूल का रूल हम कहते हैं रूल ऑफ राइट, रूल बाय राइट पीपल, रूल ऑफ राइट. जो राइटियस है वही रूल करें. वी आर नियर प्लेटो दैट फिलोसफर शुड बी द किंग एंड किंग शुड बी फिलोसफर. ये कंसेप्ट प्लेटो का है. इसके ट्रेसेस आपके हिंदू से मिलते हैं. that we should have a rule of right people, whereas West has rule of law. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, इन वेस्ट, इन नाजी जर्मनी एटसेट्रा, इट वाज नॉट रूल ऑफ लॉ, इट वाज रूल बाय लॉ. हमारे अंग्रेज राज किया, हमारे यहाँ कहते रूल ऑफ लॉ है. नहीं, रूल ऑफ कर नहीं रहा. इट वाज रूल बाय लॉ. Please understand the difference. Britishers exploited us. Britishers ruled us, not by rule of law. They ruled us by law. ये दो different term हैं. So what Plato had said, this is nearer Indian Hindu vision. That rule of the right. और वो right क्या होगा? जो भी आदमी स्वधर्म को मानता है वो राइटियस है. किंग शुड बी राइटियस. किंग शुड ऑल्सो ऑब्जर्व किंग्स धर्म. और मनुष्य में ये भी है कि ब्राह्मण को सजाए मौत नहीं दी जा सकती फॉर एनी क्राइम, लेकिन किंग को मौत की सजा भी दी जा सकती है. इफ ही बिकम्स एन अधर्मी, अगर राजा अधर्मी है तो उसको सजाए मौत दी जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण को सजा मौत नहीं दी जा सकती. ये आपका मनु कोड कहता है. दिस व्हाट मनु सेज. एनीवे, सो हिंदूज बिलीव रूल बाय द राइटियस, रूल ऑफ द राइटियस, वेयर एज वेस्ट बिलीव्ड इन रूल ऑफ लॉ. बट इन मेनी केसेस बिकम्स रूल बाय लॉ रादर देन रूल ऑफ लॉ. ये एक और डिफरेंस है. मैंने आपको नॉलेज एक्सेस सेक्शन में बता दी कि वेस्टर्न सिस्टम है साइंटिफिक, आवर सिस्टम इंट्यूटिव. उसके रास्ते मैंने बता दिया एपिस्टेमोलॉजी. तो इस पॉइंट पे और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट मी मूव नेक्स्ट. दैट हिंदू लॉ मोनोलिथिक नहीं है. हमारा स्टेट सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो हमारे यहाँ कभी नहीं रहा. इनफैक्ट इन इंडिया हिंदूज लाइफ वाज लोकल. वी नेवर हैड ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम कभी नहीं रहा. इवन अंडर किंग इट वाज नॉट सेंट्रलाइज सिस्टम. इनफैक्ट कम्युनिटीज गवर्न देमसेल्व्स. आज भी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होता था टेरिटरी का, उसको हिंदी में कुछ और कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. यूपी में तो वही नाम रखते हैं अभी भी. वो सेल्फ गवर्निंग थी. दे यूज्ड टू गवर्न लाइफ थ्रू सेल्फ. सो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था जो वेस्ट में रहा है. ये दिस इज द डिफरेंस. देन in India we had alternate system of dispute settlement. We had alternate systems of dispute resolution. We have alternate systems of law. हमारे यहाँ बड़े डाइवर्स किस्म के रूल्स एंड कोड्स रहे हैं इन डिफरेंट कम्युनिटीज. कलेक्टिवली वो सारे हिंदू हैं. मैंने जिक्र कर दिया आर्टिकल 25 दैट सिख भी हिंदू है, बुद्ध भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है. हिंदू में काफी स्ट्रीम्स हैं. और हमारी जितने ट्राइब्स हैं उन सब के अपने सिस्टम है. हमारे यहाँ कस्टमरी लॉ भी है. एंड इट नॉट नेसेसरी दैट कस्टमरी लॉ पंजाब शुड अप्लाई टू कस्टमरी लॉ और एल्सवेयर. वो डिफरेंट हो सकते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज. सो आवर सिस्टम वाज प्लुरलिस्टिक, इट वाज नॉट मोनोलिथिक. ये प्लुरल सिस्टम था.
with multi-serial legal orders, जिसका जिक्र आज रॉल्स को करना पड़ा। उसने किताब लिखी कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसका क्रिटिसिज्म हुआ that your theory, however ideal it is, justice as fairness, this applies only to organized political societies who are progressive. This does not apply to non-formal social organizations. ये उसका apply नहीं होता. It does not answer the issues before international community because there is no political hierarchy there. All states are equal. उसको कैसे explain करोगे? How do you explain international law? He had no answer. Ultimately, he wrote a book in 1993, Law of the People. और उसने recognize किया कि एक single theory cannot answer all the questions. And therefore, he classified societies in different categories. ये आपके लिए बहुत important है और ये reflect करता है diversity of Hinduism on Hindu system of law, which ultimately rolls also taken account not by the name Hinduism, but then this reflects that something is taken from Hinduism. And Amartya Sen has certainly taken from it. So he says, societies of people can be classified in the following categories. Number one, this is the book Law of the People, published in 1993. He has revisited theory of justice, which he had given earlier. उसको revisit किया है इसने. एक society को कहता है reasonable liberal people, society of reasonable liberal people. इसका hallmark क्या है? This is organized in the former state, constitution and permanent legal institutions. So reasonable people, ये advanced societies हैं. West की society ऐसी ही है. Second कहता है ये decent people, society of decent people. Decent people are not as organized as Western political organization, but they have a hierarchy. They are hierarchical structure, like in Islam. Islam के अंदर is a society of decent people. अब word decent आप use करेंगे नहीं करेंगे वो मैं नहीं कह सकता. But Rawls say decent people are who are hierarchically organized. Like Islam, Kazakhstan. He calls society Kazakhstan. इसका नाम दिया उसने. Society of decent people is Kazakhstan. Kazakhstan में क्या होता है? That here there is a consultation. Governance is by consultation. Like इस्लाम की ट्राइब्स में क्या है कि उनकी होती है पंचायत जिरगा. ट्राइबल चीफ जिरगा को हेड करता है, सारी पंचायत बैठती है. सो जिरगा के अंदर डिस्कशन होता है और डिस्कशन से जो इवॉल्व होता है वही बात मानी जाती है. दिस इज गवर्नेंस बाय कंसल्टेशन. दिस इज सोसाइटी डिसेंट पीपल, बट दे आर नॉट लाइक वेस्ट. दे आर नॉट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड. ये दूसरी सोसाइटी है. तीसरी है आउटलॉ. आउटलॉ सोसाइटी. आउटलॉ में you see there is no reasonable law. उसके अंदर reasonable law हो ही नहीं सकता. वो तो आउटलॉ है. वो किसी लॉ को नहीं मानती. उसमें कोई लॉ नहीं है. Only whims of persons who rule. Their whims work. जैसे युगांडा में युद्ध यमीन था या दूसरी के अफ्रीकन स्टेट्स हैं जहां पर डिक्टेटर्स are the demigods. They are the law. Whatever they say is the law. They are outlaw societies. तो इन पर reasonable law apply नहीं होगा. Next है benevolent. Benevolent societies. Benevolent societies में ये क्या कहते हैं? That they are very near to ideal theory. यहाँ पे आइडियल थ्योरी अप्लाई हो सकती है. दे आर बेनेवलेंट, सो दे एक्सेप्ट द कोर वैल्यू लाइक फंडामेंटल राइट्स. लेकिन इनमें क्या है
there is no participation. Benevolent है, like a benevolent dictator. Benevolent है, फंडामेंटल राइट भी देता है, वेलफेयर भी करता है, लेकिन कंसल्टेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है. That's benevolent society. Then एक और कहता है वो, इसका नाम उसने दिया है societies burdened with unfavorable conditions. Societies burdened with unfavorable conditions. वहां की जो कंडीशन ऐसी हैं कि वहां पे कोई इस किस्म का लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता. क्लाइमेट इज वेरी हार्श, पॉपुलेशन नोमैडिक, वेरी स्पार्स, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ फैमिलीज हैं या छोटी मोटी ट्राइब हैं. सो वो सोसाइटी ऐसी हैं जो आर लिविंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस, लाइक दो लिव इन आर्कटिक सर्कल में जो लोग रहते हैं, वो सोसाइटी बर्डन अनफेवरेबल कंडीशंस. तो कंक्लूजन का ये है that ideal theory of justice applies to number 1 of regional people. This can be extended to decent people society. उनको एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन बाकी जो 3 हैं इसमें आइडियल थियरी ऑफ जस्टिस अप्लाई नहीं हो सकती. ये रॉल्स का कंक्लूजन है. दिस मीन्स Rawls has seen the diversity of different societies, and he came to the conclusion that ideal theory of justice cannot be applied uniformly to every society, to every community. This means he recognizes, not by saying it, but by inference, that he appreciates the Hindu diversity of Hindu systems. इसलिए ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम भी कहते हैं, दूसरे भी कहते हैं, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ. ये जजमेंट में कहा गया है, ये बहुत से कमेंटेटर भी कहते हैं, इज ए वे ऑफ लाइफ. इट गवर्न्स एंटायर लाइफ, ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये सिर्फ गॉड और रिलीजन की बात नहीं करता, ये सारी बातें करता है. Now, Amrita Sen, he was critical of Rawls. He wrote a book, Idea of Justice, and he dedicated it to Rawls. Rawls को ही डेडिकेट की है, उसका क्रिटिक है. वो भी यही कहता है, Rawls theory cannot be uniform to all. He believes in plurality, मल्टीप्लिसिटी. और उसने 2 वर्ड उठाए हैं आपके संस्कृत लिटरेचर से, हिंदुइज्म से, मैं पहले बता चुका हूं. एक नीति और एक न्याय. न्याय ऑब्जेक्टिव है, नीति एक मीन्स है. नीति मीन्स फॉर्मल अरेंजमेंट्स, फॉर्मल मीन्स टू रियलाइज न्याय. आपका कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लॉ, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, सारा ये नीति है. लेकिन नीति का आउटकम क्या है? नीति का आउटकम न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लेकिन है नहीं. बिकॉज फॉर्मलिज्म किल्स जस्टिस. रॉल्स ने भी यही कहा और आपके अमृत सेन ने भी यही कहा. तो उससे पूछा भाई क्या किया जाए फिर? उसने कहा देखिए, these cyclic elections, formation of governments, making of law, court system, dispute settlement, इससे न्याय नहीं होगा. न्याय होगा एंटाइटलमेंट से. इकोनॉमिक ग्रोथ विद गारंटी ऑफ एंटाइटलमेंट्स. अब ये एंटाइटलमेंट कौन देगा? He prefers, he recommends what he calls government by consultation, government by discussion, गवर्नमेंट बाय पार्टिसिपेशन. वो पार्टिसिपेशन कैसे होगा, वो कंसल्टेशन कैसे होगा, इस पर अमृता सेन साहब ने कुछ नहीं कहा. ना कुछ कह सकते हैं. हमारे पास ह्यूमन सोसाइटी में कोई तरीका नहीं है कंसल्टेशन का या पार्टिसिपेशन का, एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेगुलर इलेक्शंस. इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है.
रेफरेंडम आज की टाइम में नहीं हो सकता, प्रॉब्लम वेरी लार्ज, हर इशू रेफरेंडम नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई अमृता सेन belongs to postmodern jurists who is super critical, demolishes everything, deconstructs. He is anti-foundationist. बड़ा पॉपुलर है, दिखता बड़ा पॉपुलर है. But then he has not suggested any integrated theory of justice. उसने कोई integrated theory पेश नहीं की, उसने कोई alternative पेश नहीं किया. But then he has borrowed from Hindu law the two important concepts, niti and nyas. This is how we compare and differentiate between the Western thought on law and the Hindu thought on law. So there are many things to be talked about. Everything would not have been talked about, could not have been done. I have given you some important highlights. मुश्किल ये है कि हमें अपने बारे में बहुत पता नहीं है. हम वेस्ट के बारे में ज्यादा जानते हैं, अपने हिंदू के बारे में शायद कम जानते हैं. टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी पिछले एक हफ्ते से पढ़ाई की है ये जानने के लिए कि आफ्टर ऑल हिंदुइज्म है क्या. अभी तक तो मैं जानते नहीं था क्या है. ये सारा कुछ मैंने पढ़ के जो इन्फ्लुएंस निकाले हैं, ये मेरी एक हफ्ते का एफर्ट है. ऑनेस्टली आई ऑल्सो हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट हिंदुइज्म इज लाइक. So this is where we conclude. Now you may have some questions. Questions are always welcome. Yes. और आपको भी हिंदू के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. मेरी फीलिंग ये है कि हिंदुइज्म के बारे में आप भी उतना ही जानते होंगे जितना मैं एक हफ्ते पहले जानता था, या कुछ लोग हों जो बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते. This is how we compare the two. So two are poles apart. There is not much of a common ground between the two systems. और जो चला गया वो चला गया. It can't be revived because most of it obsolete and out of date, except one thing which we have revived, and rightly so. That don't depend on adversarial system of dispute settlement. Bring in reconciliation and conciliation. लोक अदालत, पंचायत, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. फॉर्मल कोर्ट्स आपको न्याय नहीं दे सकती, और देंगी तो 2 पीढ़ियां मर जाएंगी, और फाइनेंशियली आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. तो हम वहीं आ रहे हैं वापस. दैट सिस्टम मस्ट बी कॉन्सिलेटरी. आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, पंचायत, इकरार, इसी सबसे डिस्प्यूट सेटलमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा. और हम उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ये हिंदू सिस्टम था जो आज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स. So if there is a question, please ask your question. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was really a very enlightening session. I would actually, sir, we have also crossed the time limit and we are running short of time. So, No, time limit is not the problem, except Yeah. that I've been talking for almost 3 hours now. but I think the session was comprehensive enough to discuss everything. It had to be because you can't condense it too much. Exactly, sir. Exactly. But I hope So- you did get something out of it. अगर Yes, इसमें से yes, 10% sir. भी आपको Absolutely. होगा तो Absolutely. शायद मेरे ख्याल से कुछ फायदा होगा आप लोगों को. Yes. But you have to read further. That's why I had asked Dr. Chanchal, Mhm. provide them reading material, reference Yes, दे so दीजिए, we have इसमें पढ़िए. shared the materials with our हाँ, participants. वो मेटेरियल आप जरूर पढ़िए, और डेविस की किताब तो जरूर पढ़िए. ठीक. सबसे पहले डेविस ही पढ़िए, उसके बाद में बाकी रेफरेंस मटेरियल पढ़िए. Sir, before we I wish you all the conclude, best with this. sir, before we conclude, I would like to welcome one of the participants, Anirudh Sood, for thanking you, sir.
Anirudh, please. Yeah, am I audible? Yes, yes. you Right. are. Okay, thank you so much, sir, for your much needed insightful words and guidance on the topic in hand. This was such a deeply informative and thought-provoking session, traversing us through various facets of Hindu theology, epistemology, and mythology. I am sure the participants would agree on this with me in unequivocal terms. As very rightly Well, observed by you, sir, the inquisitiveness to think out of the box, objective cognitive approach, and transcending beyond ideological barriers surely enables us to get the insight of what is indeed true or an ultimate reality as distinguished from Maya. Now, speaking of Maya at this juncture, if I may be so permitted, I shall refer to what very Reverend Sant Kabir Sahib ji has said in the context of Maya. He said, yeah, and I quote, काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों को खो unquote. right, Meaning right, thereby right. your persona is as illusory as the Maya is. Commemorate the divine and let both of them go. We are so blessed to have you with us, sir. For there is so much for us to learn from your academic and administrative acumen each time we get the opportunity to hear from you, sir. I am sure all the participants have a lot of points to ponder. I convey my deepest sense of gratitude to you, sir, for being part of this capacity building program. I You once have again, on spoken behalf of Himachal Pradesh National University, Shimla, thank you so much, sir. wonderful words and very well summarized. And as I suggested that please go through the readings जो आपको मिली हैं जरूर पढ़िए उससे आपकी ज्ञानवृद्धि होगी थोड़ा बहुत जो पता है उससे शायद आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा एंड आई एम ऑलवेज डिलाइटेड टू टॉक टू माय कोलीग्स ये मेरा पैशन भी है इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि मुझे कोई भी टॉपिक दे दीजिए अगर मुझे 1 महीना पढ़ना पड़ेगा कोई बात नहीं आई विल प्रिपेयर एंड वुड यू बिलीव दैट आई हैव बीन रीडिंग फॉर लास्ट 1 वीक लास्ट 1 वीक से मैं हिंदुइज्म की स्टडी कर रहा हूं टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ पता नहीं हिंदुइज्म क्या है जो आम आदमी था वही मुझे पता था but then deeper you go more you learn so it has been a very enriching experience to talk to you and hope to meet you again soon thank you very so much sir. Thank and you so all the much. best all the god bless you all So, now thank you, I'm sir. closing down So, Thank you, sir. thank you so much